जब रीसेट करते हैं तो अमाउंट वही रहती है, टाइम मिल जाता है? टाइम नहीं, टाइम नहीं मिलता, अमाउंट वही रहती है। मीनिंग कि आपको रीसेट इसलिए मैं कभी रेकमेंड नहीं करता, सिर्फ जाएं उसको कैंसिल करें, नया अकाउंट ले लें, नेवर रीसेट। मैंने एक किया रीसेट जस्ट फॉर ट्रायल। हाँ, उन्होंने पहले मुझे रेगुलर प्राइस 75 हाँ, की बात है, तो मैंने बोला ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस है, फिर उन्होंने उसको घटा के 50% नहीं वो ठीक है, लेकिन आपको टाइम नहीं मिलता। हाँ, मीनिंग कि आपके 30 डेज तो नहीं दोबारा रीसेट होते, वहीं से चल जाता है आगे। अच्छा, तो अब आपको फिर ये नुकसान है ना, तो उसको हाँ, तो उसको कैंसिल करें और दोबारा लें। लेकिन वो भी कुछ कंडीशन है जो सही नहीं है एक्चुअली, कैंसिल कर वो बेटर है। कैंसिल बेटर है जी, आपको एक पूरे 30 डेज मिलते हैं। क्या प्लान है सर देखें, लो टू हाई ही है मेरा ख्याल है। आई थिंक सो, होपफुली विल फिगर आउट, बिग बॉस जो भी ऑडियो दें। सो all right. Areas are updated. जैसे ब्लू नोट के आपके 11 पास हुए हैं, तो उन्होंने 3 दिए ना, 3 एक्टिव, बाकी पर होल्ड में पड़े हैं, बाकी है उधर पड़े हुए हैं पेंडिंग में। पैसे उसके भरने पड़ते हैं? नहीं, जब तक पुराने फेल ना हो तो आपको 3 एक्टिव पीएस देते हैं। जी सर, एक सेकंड मैं लॉग इन, 5 मिनट दो, 5 मिनट। ओके मुशरफ भाई,
Okay. Base down, pressure down. Wow. What's so 20? Same. उसमें आपके ऑटोमोटिव के तो टाइम खत्म हो गया जी, तो एटलीस्ट फोर्ड वो तो नहीं शट डाउन करेगा। ऑटोमोटिव नो टैरिफ्स। वो कल इसने कर दिया था ना। So this is annoying. Every day we are dealing with a guy who has no stability. Imagine करें आपके पार्टनर ऐसे हो जाए, घर दबाओगा। अपना घर तबाह करें कोई बात नहीं, बाकी के मुल्कों की तबाह कर रहा है। नहीं, असल में हम सारा पूरी दुनिया में रिलाय उस पे करते हैं ना, ये प्रॉब्लम है। डॉलर यूएस उनका, बैंक्स उनके, स्टॉक मार्केट उनकी, सब का सामान है वो ऐड करेगा, हम लोग बेचारे ऐसा ही। कल क्या कर दिया जी, शराब उठा के रख दी, बस यही कर सकते हैं, शराब लॉकर में रख दी। अच्छा अच्छा, $3 billion industry just in Ontario. वाओ। वो तो कहते ओ हमें तो पता नहीं पता। नहीं वो तो चला रहा है। वो ड्रग को घंटा अच्छा बफलो सिटी और नाइगर सिटीज और वो सब हैं जो बॉर्डर लाइन पे, उनके रेस्टोरेंट्स को बहुत फर्क पड़ रहा है। वो मोस्टली कनेडियंस आते हैं वहाँ पे। और ट्रैवल भी कल सुन रहा था CP24 पे कि सारे लोग अब डोमिनिकन जाएंगे उधर। तो वो कहते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान से वीजे बंद कर रहे हैं, वीजा बंद कर रहे हैं यूएस का अगले हफ्ते से। क्यों? आज अनाउंस पता आज अनाउंस हुआ, पता नहीं कुछ। आज अनाउंस हुआ, कुछ लोगों का वर्ल्ड कुछ ऐसा अनाउंस हुआ। कुछ लोगों का नहीं, जैसे पिछली बार उसने बंद कर दिए थे सारे कंट्री से, ये सीरिया, ईरान, इराक, एंट्री बंद कर दी उनकी। एक्सेस ऑफ ईविल उसने बना देता ना, एक्सेस ऑफ ईविल। उसमें सीरिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान को बीच में डाल। अभी आज से अफगानिस्तान और पाकिस्तान को So कुछ चीजें तो अच्छी कर रहा है। अब जैसे लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो दे रहे थे ऑन दी स्कीम्स में गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, बट हमें नहीं पता कितना सच है, झूठ बहुत बोलता है ये नंबर एक चीज। और हमें कौन सी सब्सिडीज देता है ये कनाडा को, कौन सी? अभी तो वो ड्रग की समझ नहीं आती कि हम लोग पता नहीं कौन सी ड्रग, वो जो कह रहा है ना कि ड्रग इम्पोर्ट, हाँ लेकिन 1% जो जाता है वो साउथ ऑफ द बॉर्डर। यस यस, सो हमें ये बनती चाइना में है और इंडिया में है, और नॉर्थ से वहां से इंडिया में होती है। हाँ, बनती है। बनती यहाँ पे है, इंडिया चाइना से आता है। इंडिया में बनती है, इंडिया बनती है, इंडिया में बनती है। जो यहाँ पे आती है ना, नहीं जो यहाँ पे जाती है ना यूएस से, वो कनाडा में बनती है, क्योंकि रॉ मटेरियल वहाँ पे आने नहीं देते, चाइना से इम्पोर्ट कर लेते कनाडा वाले। हाँ, चाइना से मतलब उसमें जो इंग्रेडिएंट है 10-15, वो आधा किसी पोर्ट पे उतार लिया, आधा किसी पे उतार लिया, आधा किसी पे उतार लिया, फिर बना के उसको भेजते हैं यूएस में। वो तो क्या मैक्सिको नहीं करता होगा? मैक्सिको ज्यादा करता होगा। मैक्सिको से तो कुकिंग आती है ना, फेडरल जाती है। कुछ आया था कि उसमें हमारी परसेंटेज तो कुछ पाउंड की है सर, उनकी ज्यादा है। all right, so what's the so we have news, unemployment claims were less, people lost jobs, so that's a good sign, but trade balance is really down, so market pushed down, trade balance बहुत कम है।
Again, President Trump speaks. That's annoying. What time? आज भी लिखा हुआ है, ये नहीं बताया. Tentative लिखा हुआ है, so we have no idea. नहीं, दोनों चीजें. So let's look at night high for Nasdaq. 20,650 is the number. Nasdaq 20,300 is the bottom number. So what are we looking at? कल S2 तक गई थी ना कल? S2 तक गई थी कल. आज तो वैल्यू एरिया के आसपास ही हो रही है. और कल हाई कितना गई थी? High yesterday, March 5th, Nasdaq yesterday went 20,725. So a little slightly lower than R2. So we have value areas, we have everything for. All right, so let's do my morning routine. All right, good morning, everybody. Thursday, March 6th, 9 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys are joining us at superareas.com. I'm live on Zoom, RTMP, YouTube private channel. Everything looks good. TikTok audio is going to get muted when the premium stream is going to start. What are we looking at? So Forex Factory, first thing is first, 8:30 news. Less people lost jobs in US. That's a good sign. However, the trade balance is horrible. So that market pushed down once again. Right now, price is very close to S2 and below S2. Let's see where what happens next from here. So Legends, let me connect all my connections. Apex, Bullnox, Legends, per DR, take profit. So these are all good to go. So from S2. Low to high. So. Whenever he says low to high, that means we're gonna do expected low and we'll go long from there. Right now, price is in S2, and it has hit below S2 one time at around 8:30, and now it's going up from S2. At 30.20, we are in a swing, and right now we're in a trace, and Fibonacci boxes worked right there. So let's see what happens. हाँ वो लेकिन वो तो मिड बैंड वाला है ना, लेकिन फिबोनाची में तो लॉन्ग हो चुका है, 2 पॉइंट हो चुका है. तो हाँ 2 पॉइंट और 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मे बी 2 का स्टॉप लॉस. So we are seeing which way it goes. Let's see. So blue green fibs mean market हो नीचे? नहीं, फिब्स का से कोई ताल्लुक नहीं है. फिब्स का है कि जब प्राइस रिट्रेस होगी, इन बॉक्सेस से वापस जानी चाहिए. ये ट्रेड का कोई ताल्लुक नहीं है. मार्केट कुछ भी कहीं भी कर सकती है. सिर्फ है कि अगर रुकी, जिस तरह ग्रीन आई ना, वो 5775 से वापस गई, तो हर रिट्रेस में 30-20 में बॉक्सेस बनेंगे. तो कंप्यूटर बताता है कि अगर रुकी तो इन बॉक्सेस के अंदर रुक सकती है. बस दैट्स इट. सो फिब्स का सिर्फ और सिर्फ यही होता है और कुछ भी नहीं. हाँ, तो लेकिन जो फिब्स देख रहे हैं वो मिड बैंड का, उसका कोई ताल्लुक नहीं. अब फिब्स जिसने लिया, उसने ग्रीन से लॉन्ग कर दिया, 2 पॉइंट लिया, बाहर आ गए, तो वो ट्रेड ऑलरेडी डन भी हो चुका है. अब तो फिब्स का ताल्लुक किसी और चीज से नहीं है. करेक्ट.
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। चल नहीं रहा कि क्या है इसको? क्या चीज? नहीं वो अभी कनेक्टेड नहीं है। है? नहीं लेकिन वो फिबोनाची अगेन हाँ S2 से बाउंस हो गया ना, तो लेट्स सी। मुझे पहले चाहिए इसको अभी लोअर हाई आया है, सो इट्स स्टिल कन्वर्सेशन गॉट हीटेड किधर? ट्रम्प और उसकी लड़ पड़े हैं, कह रहे हैं। ये कौन आज कल कौन लड़ा है? प्राइम मिनिस्टर भी? ओह नहीं निकल की खबर हो। ट्रूडो और ये ट्रम्प की गॉट हीटेड। अच्छा नहीं अब तो हर प्राइम मिनिस्टर वो ज़ेलेंस्की के साथ बेचारे के साथ क्या किया। दुनिया में नहीं है, मतलब मुफ्त में कुछ नहीं देगा। हाँ वो मांगे जा रहा है अच्छा तो 1 साल 2 साल। So I am waiting for now expected low before I do anything. Good morning. Good morning.
There you go. My audio is okay. Audio. Mic, I just restarted. I think every time I turn on TikTok, this goes away. So mic should be okay. Okay, good. All right, guys, just 30 seconds to do this quickly. So I bear witness to myself that today I will always check news, which we did. I will always place my stop loss. I will follow my strategy and not trade randomly. I will treat today as my first trading day. I will stay disciplined. And I will do what I see, not what I think. There you go. Perfect. Thank you very much. I know it's annoying for 30 seconds, but just to force it in your because then your brain is like, hey, I just committed to myself, right? So waiting for expected low. So that is my game plan. I will go long from expected low on ES. हैं? Fibonacci के नीचे वाला बॉक्स है. Yes, 1510. So right now दोनों 30, 20, 15, 10 the different Fibonacci boxes. हाँ वो उसकी रिट्रेस के होंगे, वो उसके होंगे, तो वो ज़्यादा 30-20 है. So 5, 7, 8, 8. हाँ ये उन्होंने पूछा था ना, सेल का सेटअप है, लेकिन अभी ब्लैक कैंडल फॉर्म नहीं हो रही, अभी सिर्फ 8.5 हुआ. ये अभी पता लग जाता 5. एक टिक आ गया आपको प्रॉफिट. एक सेकंड अभी सिर्फ एक टिक प्रॉफिट में. सेल में सेल अभी 3 टिक्स और दे दे हमें, दैट वुड बी अ गुड वन. Done. Perfect setup. So we saw the lower high. After higher highs, higher low, we saw a lower high on 30-20 mid band. So Vikram Bhai found it, and he's like, hey, my setup is being ready. So the computer is saying, yes, it should go down. We entered from black candle, got over 1 point, 2 points, whatever, 1.5 points, and that trade is done now. और देखें फिब के अंदर से आ गई, इधर भी फिब और इधर के फिब के नंबर सेम थे, और फिब के अंदर से 2 पॉइंट भी दे दिया आपको. So whether you do fib, whether you do that's a third attempt to test the S2. Let's see if it goes back up again one more time and makes a black candle. So this is a retrace. I think it should make an extension. I think. जो आपने सेटअप देखना है, देखिए उन्होंने स्पॉट किया 30-20 में, उन्होंने 30-20 में ट्रेड लिया. अगर आपको लोअर हाई मिल गया तो आप 15-10 भी ले सकते, उसका मैथ डिफरेंट है. 19 टिक्स 8.5 टिक्स.
तो इन्होंने सेटअप देखा था 578875 minus 8.5 and went in for that 1.5 points. So that one trade is done. 1510 पे अब आया है. So let's see if it follows through and gives us 4 ticks. 5784.75 minus 4.75 is 5780. If it goes to 5780 minus 4 ticks, that's a good sign for us. Okay, there you go. Black candle got formed, and we got so far 1 tick, 2 ticks, 3 ticks, and 1 more tick, please. 2 ticks so far. 3, 1 more tick, done. So that black candle worked. Udhar se dekha lower high, black candle to the downside, 19 tick minus, and you're done. You're 1 point from this setup. So this was swing retrace extension on 1510. Exactly. ठीक है, नो प्रॉब्लम. हमने 1 पॉइंट 1510 में मैं 1 पॉइंट के लिए लेता हूँ. 1 पॉइंट बहुत होता है. So it's 4th attempt to test S2 right now. And it's at the value area. So let's see which way it wants to go. So now I'm waiting for it to go to 60 to 50. Expected low तो कल वाला ही एरिया लग रही है मुझे. Unless I'm watching कल के एरिया तो नहीं आज Thursday. So higher high, higher low, lower high, black candle, 4.75, 4 ticks, 1 point, done. 4th attempt to test S2 right now. So it's opening at S2. Opening at bottom of the value area. 60-minute has a higher low. So 57.57 is my number for going long. थोड़ा सा ग्रीन आया तो 1510 के पास Green पहले higher वो लग लेने दे higher low to get the best setup to go green, like so, meaning that I need a black candle to the upside. I need a higher low on 1510. Right now there's a lower low, right? So right now I need a higher low on 1510 to go up. नहीं डाउन के लिए तो आप मिड बैंड लेंगे ना. हाँ डाउन की बात करो. डाउन आपका मिड बैंड है 5781. That's the mid band. That's a beautiful setup for the swing retrace extension that already happened, by the way. S&P sir. अभी नहीं. Until I have a higher low on 1510. Until then, I'm not going anywhere for long. So the way it should technically work, go to 5781, give me a mid-band to the downside, don't break 5776, and then I will have a higher low. But until then, I'm not going long at all. So that's my plan in future. How will things work out, right? So right now, that black candle trade is flawlessly working. So I think again today, who knows, since this is maybe second week, straight opening, going to expected low, straight opening, going to expected low. Like they managed to push it up yesterday quite high, 58.70. Again, 4th attempt to test the area. S2. So in about 6 minutes, the trade balance is the one that's bothering me. So
All my trades on ES I'm holding until expected low. So I think expected low should be okay for Nasdaq because it's a 330 minus 150, almost 180 points. Some odds or speeches, but let me bridge Daniel's mic. So that would be. मिड बैंड नीचे जा रहा तो नीचे हम करते जाना हाँ मिड बैंड नीचे नीचे जा ही जाना है ना साथ मिड के लिए एरिया कंसीडर किया जा सकता है because it's coming from an S2. This mid band of 1510 has that one condition that's still risky because it's bouncing from an area, right? So that mid band could, like, now I'm not guessing at 90%, so you reduce it down to maybe 70%. That because it has all is good. So I'm hoping the market opens, touches the mid band, comes down, doesn't make a lower low, and then to the upside. That's the plan we are looking for. But maybe market open and straight to expected low, 57, right? So if that's why I want to go long at expected low, not before that. Or my both charts start to make higher highs, lower lows, higher highs and higher lows. Look, it's not stopping yet at all. Now everything is clean. Good morning, guys. Okay, sorry. Good morning. Assalamualaikum. Namaskar, Sasyakal, guys. Intro, microphone check. जी वालेकुम सर जी वालेकुम This is good morning, Kas. Good morning, Ash. Good morning, Saurabh, Lean. Good morning, Akesh, Sunil ji, Alpha ji, Majid, Jamal, Rizwan, Clifford, good morning. Manpreet, good morning. Ranjit, Sandeep, Paresh, good morning. Deep, Manish, Parag, Ashwin, good morning, everybody. Quick review about energized material and posted on our website, trading floor, not as trade advice, just meant to enhance your trading decisions, but not make it for you. You take no responsibility for profit or loss. You solely responsible for your actions and don't you made yesterday, you'll make it today. Always be on the floor, always be stopped, and always ready to accept those losses. And do what you don't do what you think. Trade this market the very first day you trade. And all the areas we have on our graphs or on superregional.com are not buy and sell or buy and sell advice or any type of financial advice. It's just information and educational purposes only. And we take no responsibility for any action taken by any subscriber. Today, S&P, Nasdaq, Dow, Russell 2000, the base is down, pressure is down. Came down from yesterday, R2 area, and 118, almost 1 tick less, 119 points, retracement down, going for an extension to the downside. Almost very close to our expected low for the day, S&P 500 down, back up. In my opinion, it should come down to break
our 50 area creates a bigger diversion. Actually, to break 44 area to create a diversion to the upside. Low to go up would be a good strategy. And high to go low also a good strategy because your situation is not good. It start a war with everyone. And look at the euro, crazy euro all gathered together, and very strong push to the upside on euro. And euro goes up like a previous banana today, and even previous since Trump started this war. Our expected high for S&P 500 is 5890 to 5900. The Nasdaq high is 20,900 to 950. S&P low is same as yesterday, 5760 to 50, and Nasdaq today low is 20,150 to 100. Overall, Nasdaq 510 points up, came down 89%, breakout night session low, pushing down, getting close to break as to getting to our expected low for the day. And expected low today is very close to, you can say, yesterday low. And yeah, very close to yesterday low area. And other markets, if you look at the Russell 2000, Russell 2000 is not going down, and Dow is not going down, because Dow and Russell already came down and get very close to yesterday. If you look at the Russell 2000, almost, if you look 100%, get close to 98%, actually it came down, 98%, just 2% difference. And if S&P and Nasdaq goes down, we will see Russell 2000 again will go down and hit our expected low for the day. And British pound, very strong push to the upside on our British pound. And the crazy push to the upside, especially previous 1 week, it's just banana, it's crazy. And same thing with the euro, it's not different from the euro. Euro also exactly same, because now they all gathered together against the US. Even Canada is joining them, and we'll see if Mexico, what Mexico will do. Canadian dollar above PP, and euro almost very close to expected high for the day. And Canadian dollar just sitting at top of the value area. A retracement of yesterday's swing. Yesterday it went to our expected high for the day. And this is a retracement, 48% retracement. Actually, according to book, yes, the retracement is done on our Canadian dollar. Crude oil came down yesterday, and today it just retraced back up. And whole night it did not do anything. 73 cents and 75 cents to the upside. 102% push to the upside of the push that we had to the downside. And now FDAX made so crazy 1,121. That's a big push to the upside, and reach to our expected high for the day. So FDAX, our expected high for the day is done. So we might see our expected low for if FDAX our expected low, we might see to the downside. Gold is up right now. Gold is pushing back up. Although our base is down, but pressure is building to the upside. Gold came down yesterday, $43.70, and after that we did not get a lower high yet. And we'll see if we see our lower high and then push to the upside. Copper is up, just fill up the value area. You see very nicely copper came down, and yesterday went up 33 cents, came down around a tenth of 9.8 of a cent, and almost a tenth of a cent. And overall right now it's going up, fill up the value area. Silver, same as gold, but silver movement is slow, above PP right now. So silver is above PP right now in a value area. Bitcoin is going down below PP right now, and Bitcoin went up $1,465, and $11,465 push to the upside, came down 32% right now. And same thing with the Ethereum. Actually, Ethereum is not moving
much. It came down 106 points of 160. So 66% push to the downside. And natural gas went up crazy. Natural gas went up crazy. And if you see yesterday, 100% hit our expected high for the day. And today it retraced back down 16 cents. And right now in value area and in PP, but not much movement on natural gas. Long-term natural gas should go down because as soon as we hit the warm weather, natural gas will go down. And they want natural gas to stay low. What is the reason? The reason is Russia. And same thing, guys, on S&P 500 came down and break our night session low. And this is what we were expecting. Base is down, pressure is down. You see Russell 2000 very nicely again comes down. Dow start going down. Dow is pushing down towards our expected low for the day. And yeah, today all four sinks. All four markets are synced today very nicely. News, according to news, price should go down. We have non-farm productivity, not good. Our labor cost is not good. Our trade balance, according to trade balance, price should go up. Excuse me, but price is still pushing down because of our non-farm productivity. And 10 o'clock final inventories are coming. But tomorrow is our day. Tomorrow is very, very important day. And tomorrow we have average hourly earnings are coming. Non-farm employment claims are coming. Unemployment rate is coming. Then 10:15, 10:45, and 12:20. And then the biggest event is at 12:30 p.m. 12:30 p.m. Look, whole day, even Cougar and twice Cougar is coming at 1 p.m. and Colgar. So we'll see tomorrow. We'll see a big push either to the upside or to the downside. FOMC speech and then non-farm employment change. We'll see what will happen tomorrow. But best is area to area. And look how nicely S&P 500. This is what I'm saying. Yeah, hit and run from area to area. Yes, we can go few points from our 60 area, even 55, 54, 53, anywhere. But the best is stay in that low side from high to go low. And low to go up, yes, 30%, 40%, 50%. But in this situation, if me, I will stay in short from the high. Yes, I will pick my areas. I'll pick S2. I'll pick expected low, but I'm not going to stay longer, or I will trail my stop. Huge flood in the market, and flood is held by our areas. And but still, we'll be very, very careful with the areas. And please, guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here. Prague 16,000 area. Yes, you look. You expect anything from the market, but when we don't know. And long term, I can tell you, the expected area for Nasdaq is the long term. I mean, long term means I'm talking about June or September contract for NQ. If NQ, then S&P will go down as well. It all depends on the politics, whatever is going on in US. 57 area is for S&P 500, and long term 17,800. 17,800. First stop will be at 18,850 to 800, and the next area is 17,870. 17,870. But you expect anything from the market. It's all about what's going on in US. Please, guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here. I hope nobody missed the expected low. I hope. I took massive points from expected low and a full mini. You're welcome, everybody. बाय किया. हाँ, सारों ने बाय. मैं 57 का नंबर दे दिया था आपको. ये ना कहिएगा कि मैंने 57 पे बाय नहीं किया. ES पे 57 का नंबर आपको मिल गया था. Expected low से सारे डन हो गए हैं. So we're all done. From 57 up, I just trailed all the way 5-6 points. So
Just saying that. So 250 net divided by 50. So I took 5 points from 57. So I entered from 57, took 5 points, and I'm done for the day. For that trade, the area trade, I'm done. So ES was 57 number. That was what I was watching for. That was the lower of the band of. So that's why I didn't pick 60. So anybody who took a trade from 57 is done. Now those mid bands will start to continue towards upper range, maybe up to S2, S1, but so expected low trade is done. I'll be bored from now till what to talk. Okay, you're done. Expected low, say ES came into expected low, and every account we are done. So and also you got your first higher low, black candle to the upside, 1510 is done as well. 1510, I got my higher low. I waited for the black candle to the upside, and that trade. But right now, let's see. It's going over and over into S3. I need a higher low on my 3020 right now. That's what I'm waiting for. Then I will go long. There you go. My first higher low came. So 57, 63, 50. Oh, okay. Too fast. 57. हाँ जी देखो मेरे पीछे अकाउंट चल रहे हैं हाँ, तो हाँ। यहाँ पे है नहीं कुछ सर आपका डिस्कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर इस तरफ एक सेकेंड निंजा पे पोजीशंस कहाँ है आपकी ये चल रही है ना यहाँ पर कुछ भी नहीं है वो पीछे चल रहा है देखो नहीं अब यहाँ लेजेंड देख रहे हैं वहाँ पर ये कौन सा अकाउंट है बुलनॉक्स तो इधर कनेक्टेड ही नहीं है ये डिस्कनेक्ट यहाँ हाँ पे हाँ हो तो गया इसको डिस्कनेक्ट कनेक्ट करें ना ये अपने आप पहले तो मैंने जब ऑर्डर डाला था क्योंकि जैसे ही आपने आर ट्रेडर खोला है इधर से डिस्कनेक्ट हो जाता है वो एक दफा में एक अलाउ करता है या आर ट्रेडर करेगा या ये इसको बंद कैसे करना नहीं अभी कनेक्ट हो रहा है ना कनेक्ट हो रहा है इसीलिए मैं रिदमिक जो है ना प्रेफर नहीं करता क्योंकि वो एक अकाउंट देता हो गया जी दोनों में प्रॉफिट चल रहा है black candle to the upside is there not yet 8 point didn't make a black candle yet that's why we wait for the black candle truly to सर 8 ट्रेडर बोलेंगे तो अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा 8 ट्रेडर बंद होते प्रोटोकॉल अलग है प्रोटोकॉल में लाइव देख सकते हैं let me see if my black candle trade happens पॉजिटिव हो back into expected low zone. That was a gap trade from 3020. So it broke 57. Now I'm waiting for the price to go down more to the lower range. lower range is valid or Lower range should be okay. Should be okay.
44 is the number, remember. It has gone down to 44 previously. 44. Yeah, the Nasdaq ES has gone to 44 earlier. Good morning. So it wants to go back up. Let's see. 15-10 में yes. बन के आ गया जी. Hopefully we'll go back and not test expected low again. 1, 2, 3, 4th time is testing expected low on ES, because Nasdaq does have a lot of gap to go to expected low. So that's my first higher low in 15-10. So let's see if my black candle forms and gives me a point or not. सर 19 टिक्स का अगली ब्लैक कैंडल तक, तो क्योंकि जब तक अगली ब्लैक कैंडल नहीं आ गई आप ट्रेड के अंदर रहना. So right now Nasdaq wants to see which way. There you go, black candle happened and we are technically done. Gave us full 1 point I got. I had a buy stop. So जैसे ही हायर लो आ जाए वो आपकी पहला क्यू है कि अब हमने यहाँ से ऊपर जाना, तो एक मिनट ले लिया point. So that's the swing retrace extension one, guys. Now it's just shooting to the upside. Beautiful. यार ये वाला तो नहीं मिस होना चाहिए फिर. मैं ट्रेल किया सर, पूरा $355 निकाला इस ट्रेड में से. 50 भी कोई बात नहीं, एक पॉइंट तो मिल जाता है यार, एक पॉइंट तो हायर लो लग जाए. So 1 point. There you go, back into that again. Let's see. Which way it wants to go now. 30-20 has a higher low now. Remember, 30-20 has a higher low. Let's see if it makes a black candle and then. Let's see, black candle is about to be formed. 30-20.
Will it give me a black candle? So if you have already made money from the areas, hold back yourself and see. Otherwise, you're going to miss out. So there you go, done. Black candle to the upside. ठीक है जी, सेटअप सारे सही चल रहे हैं बगैर किसी यानी कि पैनिक के. आपको पता है ब्लैक कैंडल कहां से बननी है, एग्जैक्ट मैथ है. So have your ATM ready, have it in 1 point, 2 points, whatever, and then enter from there. So this is like the fourth time is testing your S3. Midband worked 100% because everything is green, so these midbands will start to work for you. There you go. Now you take a midband to the upside, and I can see on the radio today we were done by 9:38. There you go. From the expected low. 100% number was 5757, and now we are done. 1, 2, 3, 4 times. I now wonder why Daniel used to close the office at 11 o'clock. He wouldn't let anybody sit after 11. Because the more you're sitting, the more you're entering, right? So if you have taken based on all technical, you should have zero stop loss today. Zero. वो ले गई जी price. चली गई. 57.53 to 57.78 in less than 10 minutes. 57.78 minus 57.53. 25 points. Now we will wait for R1, guys. R1, or at least S1. Maybe it will act as a resistance. Because remember, yesterday price made it to 58.70. I will not take the setup until it goes to below like 50 now. That's my setup right now. ES, I will not go long until the area trades, by the way, below 50. Because everything in between is done. R1 is done. S2 is done. Expected low is done. So the number to watch for is below 50. Because now if Nasdaq gets to 20,150, you're looking at 20,326 minus 20,150. 176 divided by 7, that's 25 from here. That will make it synced. The ES and Nasdaq will come. So wait for below 50. So 175 divided by 5, 35 points from here. So 5772 minus 35, 5737 approximately. 5740, 5735. That's the range I'm looking for if Nasdaq got into 20,000 number, like expected low. Right now it's testing the mid band of 3020, which kind of worked in a sense. ग्रीन का बॉटम सर वो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन वो डब्बे अभी ना स्ट्रॉन्ग नहीं है, छोटे बने हैं. जब वो डब्बे बड़े बनते हैं ना तो आपको जरा फील होता है कि there you go, now they're starting to become bigger, right? So bottom. So let's see, bottom of the green. Let's see if it touches bottom of the green. Fib trade is at 57.63. Bottom of the green. Always test it with sim or micro if you're testing fib boxes. Let's see.
in this case, let me see, will it give me a break? Six, 3, 4. आ रहा है थोड़ा सा आ रहा है बॉक्स के नीचे आ रहा है. I think it's done. So that it didn't hit, it hit the green but never got hit the exact. 5765. हाँ तो लेकिन ग्रीन के अंदर आया तो फिब बॉक्सेस. Now Nasdaq needs to unleash and go to expected low. For those waiting for Nasdaq, expected low 20,100 would be a good support. Should be. Let me look at 240 chart. Previously, it did stop at, so 20,075 would be a good, 100 maybe. Because previously, 2 days ago, it stopped at 20,075. $2010. 2010, I mean, वहाँ का number. 2010. Yeah. By the way, आपका black candle फिर चल गया. Higher हो, higher, लेकिन जैसे उसने lower high बनाया तो black candle चल गया ना. तो वो एक point दे गया. Setups नहीं खराब होंगे. Higher high, higher low. First lower high means I'm still going to go down. That I'm not going up again. Look at how fast that black candle worked. ES is like Nasdaq, Ravi. These like I can't even touch ES and. Yesterday I was doing that and I was like crazy. So wait for the price to hit expected lower. 20,075 is my number I'm watching for Nasdaq, because 3 days ago it hit 20,075. So anybody who's trading Nasdaq, you should be looking at that number, 20,075. So where will the support work? Let's see. ES is back because Nasdaq wants to go down 100%. Who is hammering it down? Let's look at the stocks. The Mr. Musk. Yeah. No, his boss. Tesla is down to $266 from $484. Microsoft down. Nvidia is down to 113. And Meta, every single one of us that bothered us for 6 months to a year is bleeding now. You know, SMCA. ये देखिए मिड बैंड आपका दे गया 2 पॉइंट बिकॉज सब कुछ रेड मिड बैंड वर्कड. But I got my first higher low though. I got my first higher low after a lower low, lower high. Let's see. So you would take नहीं लगता टूट जाएगा. एक और लोअर लो बना देगा शायद. Nasdaq wants to push down badly to 20,100 number. Not taking a risk.
Let me see. अभी ब्लैक कैंडल पूरी बन के ऊपर नहीं गया. मैं ब्लैक कैंडल से ही एंटर्ड हूँ. बाई के लिए क्या रहा है अब देखें. लेट्स सी. एक पॉइंट तो देना चाहिए. Oh no. Black candle and then switch down. This it my first black candle stop loss hit. 1510 में ब्लैक कैंडल बनाई और फिर फौरन ही नीचे आ गया because Nasdaq is like fire pushing it down. Everything is red on Nasdaq. So 5740 से या 44 तक तो इसको रुकना चाहिए. डाइवर्जेंस बनाई है देखें. Green fib worked. That's good. अब रेड फिब आ गए हैं जी. और स्पीड से नैस्डैक को नीचे लेके गए फिर वापस. Yeah. Back to S2 because Nasdaq has pulled back up. So my orders are below 50, at expected low for Nasdaq, and 44 is the number I'm looking for ES area trade, or at least S1. Because you have to understand your value area and your S1 is very close together. So if it goes and fills up the please don't take S1 for Nasdaq because it could go and like shoot to the upside. So wait for at least R1 for Nasdaq. So I'm skipping S1. But ES value area 5827 is the number that I need to watch for if I'm going to go against the trend and sell from. So 5827 is the number I'm watching. No. Sell. 5827 would be sell. Top.
सर S1 बहुत वो अगर NQ ने ब्लैक कैंडल 240 पे बना ली ना, ग्रीन कैंडल, वो तबाही से ले जाएंगे उसको, आपको R1 की तरफ ले जाएंगे. So at least Nasdaq I'm going above 630 before I short. And yes, the ES 58, 20, 23, 27, that's where your things will start. सर आके चला गया पिछला, थोड़ा ओवरबॉट हो गई है. 30-20 is a little bit overbought because Nasdaq is now turning into a green candle, and if it shoots from 370, these days it could stop at 630. So I'm skipping S1 personally. Let's pay some taxes to Trudeau. हो गया जी. Incredible. Because Nasdaq is pushing up. That candle on Nasdaq is now turning into a green candle. So I'm not trusting Nasdaq until R1. Divergence, guys. Four, 3, 9, 7. $37-point swing, incredible. Because both candles on Nasdaq and ES are green now on 30 minutes, 60 minute, 240 minute. So Nasdaq, I'm again 630. Yeah,
these days. लाइन जी आपके मेरा ख्याल है पहला retrace आ रहा है 30-20 years about to do a retrace but not yet, still wants to go higher. There you go, 30-20 mid-band worked 100% after the retrace. So take your few points, get out and get inside the Fibonacci boxes if it goes there, because the green Fib boxes are sitting at 5769 and that number is important. 1 second, is it somewhere on the list? 5769 is night session low, so that's why I said I remember that from somewhere. There's a So Fib boxes and the night session low are falling inside. So it could become as a support. But अभी तो mid band ही चल रहा है 30-20 का. 69 should be a buy. But right now we can't buy anyway, because if I want to short, maybe after a divergence trade. So now my next move ahead is it will go and try to break 5796 and it will create a divergence. Let's see. Because Nasdaq is making a solid green. Our other office has Starlink Wi-Fi, and I think maybe it's down. Maybe Ford is doing something with the Starlink Wi-Fi, because again, so this is crazy. We have a divergence on 1510. वो लाइन लग गई 1510 पे लाइन वाइट लाइन. That it means the trend should go down, should change. So it is like right now is green. Yeah, so you would take a black candle to the downside. अरे 5796.75 से नहीं सर, ये वाली मिड बैंड से लें, क्योंकि मिड बैंड -5-3 करेंगे. लेकिन 1510 के डाइवर्जेंस तो हम 2 माह से इग्नोर ही कर रहे हैं, because that's so weak. Even though it made a divergence, but now 30-20 is going in a divergence, guys. Remember, 30-20 is going in a divergence. Because all it needs to do is just one more tick and it will make another higher high. पहले लाइन लगने दें सर, अभी ब्लैक कैंडल नहीं बनी. And sorry guys, I'm pushing in 4 to 5 trades for every like it's not just an area, mid-band, black candle, divergence, whatever I'm seeing, I'm just saying, hey, now next trade is possibly this. So don't mix and match though. Like, okay, if you're doing a mid-band trade, stick to mid-band, and I'll try to stay quiet. Double divergence. Let's see if trend changes. Now price is consolidating in this zone. Do I want to go up or down, right? So this is a risky territory.
से एरिया ट्रेड 0 TP रखना होगा। किसका? एरिया ट्रेड का एरिया में 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ कि जो नंबर दिया है ना, नंबर दिया था 5750 आज का, तो बॉटम रेंज से 5 पॉइंट. So 5 points, meaning that if it's going against me, $250, I am done. Like if you're doing micros, $25, 2 micros, $50. So because it means it didn't stop at the area. See, yesterday I took a trade. It didn't stop at from S3 R1, didn't stop. So I entered, and then it just broke and almost went to. So it took my stop losses at my R1. Yes. So yesterday was coming from S3 to R1, but Nasdaq did not stop anywhere. So S&P stop loss is like 3 points. no, 5 points. Give yourself at least 5 points breathing room to. That's what I use, right? So नहीं टीपी तो एटीएम के साथ होता है ना, उसको ट्रेल करता रहता हूँ. 4 पॉइंट तो मिल जाते हैं जनरली. अब जब आप फिबोनाची का करते हैं तो उसमें भी स्टॉप लॉस सर स्टॉप लॉस एटलीस्ट 2 पॉइंट को दें और 2 पॉइंट का प्रॉफिट. तो का ये बेस्ट है 1-to-1 रेशियो में. 30-20 में फिबोनाची की अगर रिट्रेस बड़ी है तो 2 पॉइंट निकल आते हैं. 2 पॉइंट लॉस 2 पॉइंट प्रॉफिट है. यस. $30-20 black candle will make a line there. हाँ अभी तो मिड बैंड टेस्ट हो, because Nasdaq has no mood right now to. No, Nasdaq wants to push up. No, not yet. No whatsoever. RT. There's no more divergence on 30-20. It didn't come down. And Nasdaq is heading into S1 and ES is far though. So let me do a bit of a math here. Only 50 points divided by 7. You're about 7 points, but no. ES has lots to go towards before it gets to value area. I think it needs a bit of a breathing room. Maybe go down to S2, make enough liquidity, and then bounce back up. Let's see. Gap trade mid on 30-20. Still wants to go higher.
238836. 238836. Double top or double bottom forms. Any? So the double. Meaning previous peak or current peak, same price. Previous high, double top and double bottom. Just then we can. नहीं उसका कोई सिर्फ एक वो लिख देता है हायर हाई हायर लो कीजिए लिख देते Almost. We are inside our S1, very close to Nasdaq. But we have a bit of a gap in your ES. ES, we still have at least 27, 25 points before I. 30-20 में इतना तगड़ा गैप ट्रेड आया हाँ 2 दफा यार मैं S1 पे ES पे करूंगा Nasdaq पे नहीं S1 से ज्यादा मुझे नजर आ रहा है वो आ रहा है आपका 58.27 अब कंप्यूटर ने प्रेडिक्ट किया है 20 से 23 तक इसको बाउंस डाउन करना चाहिए so computer said I should go down from S1 so S1 and value area and your pivots are ending at pretty much the same point. What's the black line? I think it's a pivot. Let me open that. Yeah, because your PP, your S1, your value area are very close to each other. So multi-resistance there. 60-minute chart, pivots are there, value area is there, S1 is there. So it's a strong resistance. Not for Nasdaq. Nasdaq S1, I see kind of nothing on 240. Nasdaq pivots are there. Nasdaq, I will wait for R1 because Nasdaq can go. So number it really starts from 20 to 27. That's your kind of a risky risk. But right now, it will not go in one shot there because it still needs to come down, hit a lot of stop losses, and then make some money in the market and then go up. One more time. यार एक और gap trade. Back to back. डाइवर्जन ट्रेड की जगह गैप ट्रेड है कल यही मिड बैंड फेल हो रहे थे 30-20 पे ये उल्टा हो गया so theory doesn't change so आ गई लाइन तो आ गई
15-10 करके इतना अच्छी बात नहीं 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 नहीं, वो 30-20 पे डाइवर्जेंस की लाइन आ गई, लेकिन अभी तक वो पहले ट्रेंड चेंज हो लेने दें। और देखें ग्रीन फिब से उसने 2 पॉइंट 30-20 पे हल्के से दे दिए थे, हल्के से। September 23:39.93 divergent past. Now if it has enough energy, it will go to S1. Let's see. Now it's Nasdaq is pushing up. Nasdaq says, all right, I got enough liquidity. Nasdaq R1, guys, please. $23.39.93. 2, 3. अच्छी डाइवर्जेंस पास हुई है जी। Yeah, both are lower lows, so एक मिड बैंड तो हो गया था ना। See, no, went back because Nasdaq candles are green, both. Nasdaq doesn't care. I need a higher low before I go green. On 30-20, 30-20. Tesla went up slightly, 270. That's what's causing this.
बहुत बड़ी डाइवर्जेंस थी। It's like कोई मायने ही नहीं है। No trade. Myself, I'm waiting for S1, guys. I'm not in any trade. Another mid-band, even after divergence. All right, I got a higher low. यानी 30-20 में मुझे हायर लो मिला है ना, देखता हूँ। No, 3 dots, didn't make a third dot yet. $57.96, 75 plus 8.5. 58,805, 25. Very close to previous high, lower high. No black candle forming yet to the upside. 5805.25 is my number. आप अपने रखवाई से है
It's okay, but I wasn't ready until the black candle anyway, right? So because still I haven't given up my black candle because I need that higher low, and then I need a black candle to the upside for me to do anything. चार साल ऐसे रहेगा। सुबह तो अच्छा रहा, मतलब आज के दिन के लिए सुबह थोड़ा स्मूथ है। हाँ, फिर कंसोलिडेशन है ना, आपने उसके बाद हर वक्त तो नहीं ना एंटर होते रहना कि हर मिड बैंड ले दिया, हर सेटअप बनने देना। मैं देखें सेटअप कब तैयार किया, हायर लो के बाद 8.5 पे मैं बैठा हूँ, और वो अगर वहां से ले गई तो मुझे अच्छे पॉइंट्स दे सकती है, उसका वेट कर। हो गया जी, मेरा ट्रेड डन हो गया, डन। देखिए मैंने पूरा वेट किया। So where did I do? I saw lower low, right? So okay, yeah. तो मैंने आपके सामने फारिग बैठा हुआ, right? कोई ट्रेड नहीं डाल रहा। तो swing retrace extension में I saw this lower low, then I saw lower high. I saw this first 5796. I'm like, this is my cue. I have to go up. So I took this number, added 8.5. This was my buy stop. Until here, I'm like, all right, if it goes down, I'm not in a loss. But if it goes up and picks me with it, so this is swing, retrace, extension on swing, retrace, extension, no extension. This becomes swing, retrace. Now we have an extension to the upside. Oh, चला गया. तो 2 पॉइंट इसमें निकल जाते। आपका मैथ सही होगा, एंट्री ठीक होंगी, नहीं कोई स्ट्रेस की जरूरत। सारा टाइम बैठा हूं ना, अब मैं हर मिड बैंड में तो नहीं घुसी जा रहा ना, प्रॉपर जो हायर हाई से आ रहा है, दोनों साइड पे हायर हाई है, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब ये दोनों सेम हो गए ना, अब मिड बैंड चलने शुरू हो जाएंगे। ये भी हायर हाई है, ये भी हायर हाई है, सो माई प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना इधर, क्योंकि हर चीज अलाइन हो गई है। So let's see if this mid-band kind of went from, this wants to go to S1. This is what उसके अंदर जो Nasdaq के अंदर एनर्जी है ना, Nasdaq will take it to R1. So now again I sit and wait until I have a next setup. I don't have a setup, I'm not taking a trade. सिर्फ 50-50 भी लेते जाए ना उस ब्लैक कैंडल से, तो आपका पर्डिया भी हो जाएगा, एलेजेंट भी हो जाएगा। आप होता ये कि एक मिड बैंड के बाद अगला मिड बैंड, अगला मिड बैंड, और फिर वहां से 100 लिया, 300 वापस कर दिया, 100 लिया, 300 वापस। तो फिर ऐसे लगा आप 1000 साल बैठे रहोगे, पास नहीं होगा, मैं अभी गारंटी दे रहा हूँ। तो आप करते रहे ओवर ट्रेड। वो कहते हैं 4 से 5 ट्रेड होने चाहिए। आप कह रहे हो नहीं ये भी जी ग्रीन है, बाय करो, ये ठीक, एक ले लिया अच्छा ट्रेड, अब बैठेंगे। तो सेटअप बनने देना। अब मैं वेट कर रहा हूं आपके सामने कि ये आ गई, आपके एरिया पे आ गई, वैल्यू एरिया पे ऑलमोस्ट क्रीप आ गई। एक S1 में चली गई है और एक, दोनों ही S1 में जा रही है। तो मुझे मेरा वैल्यू एरिया चाहिए, मुझे मेरा एनी डस्टिंग ले गए जी S1 को almost. सिर्फ Nasdaq needs to push slightly higher, both will be in sync. Number 971 एक्सेप्ट कर लें। ये ब्लैक कैंडल टू द अपसाइड को ट्रेल ही करता होता तो कितना लंबे बन गया। दैट्स आफ्टर द फैक्ट हमें होता है, ओ यार ट्रेल करना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सेटअप पूरा हो, 20 पॉइंट की स्विंग देके गया है, 20 में से आप माइनस कर दें 8.5,
क्योंकि 8.5 तो आपने लिया ही नहीं था, राइट? तो 20 माइनस सर 22 पॉइंट देखिए, 22 में से 8.5 आ गया जी, एरिया के अंदर आ गया जी, आपका 20 से टच हुआ है, ट्वेंटी से एग्जैक्ट 20 से टच होके 18 पे आ गया। लाइक जो कंप्यूटर ने एरिया आपको दिया जाता है, आपका एरिया भी हो। अब मैं क्योंकि ये नैस्डैक भी नहीं दो, हाँ सॉरी, एमईएस में अभी जो हाईएस्ट पॉइंट है ना 5819.7, हाँ एक टिक का फर्क होता है। ये 20 से आ गया, आपका एरिया डन। एनीबडी हु टुक एन एरिया ट्रेड ऑन S1 इज डन। I was slightly higher, it didn't pick my trade yet. I'm waiting at 27 because that's my value area figure. All Nasdaq needs right now is a big push now, but your area trade is done. Look at how beautiful it gave you 8 points from the area. And 30-20 mid-band worked from the area. 15-10 तो बड़ा था ना, उसको थोड़े से सर 14 दिन के 24 पॉइंट के बाद आ रही है, उसको थोड़ा सांस तो लेने देना। नहीं वो तो 8 स्टॉप लॉस के बाद गया ना। So now we're back into the value area, 27, 23 pivots, it's all there. But 20 area is done, guys. Now it's trying to test S1 one more time as a resistance. Remember, as a resistance, not as a support, even though it's an S, but it's coming from S3. So S1 will act as a, so support 1, support 2, support 3. But from the bottom, it is resistance. 1 and now. So every level is a support, every level is a resistance. Let's see if it breaks. So Nasdaq did respect S1. I'm a bit scared from Nasdaq the way it pushes up. So, but both markets is respected S1. That mid-band worked. ये दोनों हायर हाई से आ रही हैं, नहीं ये वाली नहीं आ रही, ये लोअर हाई से आई। ओके सर, हो चुका है, आके वापस भी चला गया। हाँ जी चलिए। अब मैं वैल्यू एरिया रह गया जी मेरे पास S1 के अंदर, बस एरिया मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैं थोड़ा ऊपर बैठा हुआ था। सर पूरी 20 पे लगी, पूरे टू आप 20 पे लगाई थी, प्रॉफिट बन गया, कंग्रेचुलेशन। आप 21 पे, मैं थोड़ा सा ऊपर था, मैं वैल्यू एरिया और पिवट्स के पास था, तो मेरा नहीं आया। अभी भी मैं गिव अप नहीं कर रहा, वापस जा रही है ये 27 मुझे दे के जाइए। 27 से सेल बनेगा क्योंकि वो वैल्यू एरिया वो देखें विक्रम भाई ने लिखा हुआ है 58 नंबर राइट वे आपको आके लगा दिया गया। ठीक है, जब से डैनियल ने वैल्यू एरिया कहा है कि वो भी लिखा करें, हम वो भी लिख देते हैं। So 58.27 is the value area top.
Yes sir, हर box ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ yes ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ so still no black candle, so hopefully we'll make a 30-20 divergence and then shoot to the downside because Nasdaq is nasty for black candle. I mean 240 is still green, so mid-band still worked on 1510. Let's see. Still haven't given up. Sir, 10 minutes ninja khologe te aaj. अच्छा 30-20 wants to push up because the black candle is to the upside. So these mid bands are working to the upside. मैं सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहा हूँ इसका. ये वही वाली कंडीशन हो गई जो पिछली ब्लैक कैंडल पे बन गई थी, राइट? सो बॉटम पे द बार आ गई है, लेकिन यहां से ये पुश करे 27 तक लेके जाए. 482, if it pushes up to 630 minus 482, 148 divided by 5, 30 points from here, 30 points from here. S2 बहुत नीचे रह गया सर, 5778. नहीं, यहाँ प्राइस कंसोलिडेट हो रही है, तो it's a little bit of an issue because 30-20 still has a black candle to the upside. So let's see. सर नहीं सर, पूरे 500 तक, पिवट्स तक, 510 तक. नहीं 510 तक नहीं, ये मैं ये भी लगा दिया था, ये भी बन गए. हाँ ये तो मैं आप देख रहा हूँ. देखिए उससे देखे ना, आपको एरिया ट्रेड एटीएम लगा के उधर भी हो गई है. जब नैस्डैक मुड़ी है तो ये भी मुड़ा है. मैंने 40-60 का लगाया था. हाँ, तो 40 टिक्स मिल गए आपको. 60 टिक्स डिवाइडेड बाय 4, तो आपको 15 पॉइंट मिल गए ना. देयर यू गो. तो आपने एनक्यू लगाया था एमएनक्यू फुल, तो ये बने आपके 15, 300 ये बन गए इधर. और इधर कितने बने? यस 150. तो 450 का ट्रेड डन हो गया. Still I'm not giving up to go to 27. और यहाँ पे अभी तक क्यों नहीं कर रहा? 500 लगा, 510. नहीं वो लग चुका है, लग के आके मैं दिखा देता हूँ आपको. आप आज का हाई देख लेना. आज का तो हाई 6, नहीं वो तो नाइट का हाई था. सो वंस अगेन बॉक्सेस कर लो सर, तो फिर 10 मिनट से चार्ज. Anybody who's joining late, majority of the trading session is done. Just be careful. S1 is done, S2 is done, S3 is done. Value area is the only thing left on the table to grab. That's it. Like, you know, when you come in, there's so much giving away, market is giving away, right? So out of all, your value area top is the only number that's kind of remaining in the market. So let's see, S2 becomes a support from for Nasdaq. Let's see. Well, right now we are heading from S1 down to what a beauty.
I missed all these points by when we were sitting so conservative. I was so. It's okay, no problem. I already made couple from black candles, couple from mid. So I just couldn't move my take profit fast. let's see if S2 acts as a support first. How far it will pull down. So that the candle has been from 57.59 to 58.20, almost 61. So if it pulls into half of it, so 58.20 minus black and 57.60 divided by 2, 30 points from 58.20. So 57.90. All right. So in Fibonacci, it worked in the middle. Then 30-20 Fibonacci, it went to middle before it didn't go to the bottom part, but it went from the green box. So it should go as low as 57.90 and then try to pull up. Let's see. Should go. Where am I coming up this number? The current 60-minute candle was 60 points. So half of it will be 30 points, so 57.90. It should fall as low as that.
57.94. Let's see. 93. That mid-band worked 100%. Both coming from lower low, both was okay. So that mid-band was fine. Red to sell, green to buy. That's it. Now it will try to make a higher low on 1510. That's my cue to go up. Let it make a higher low first on 1510. So I think it should make a higher low around 90, hopefully. So 57.90 is, it should make a higher low on 1510 at 57.90. Let's, no, 94, sorry, not 90. 90 would be making a lower low. So 57.94 plus 4.75. So 57.98.75. That should be a buy stop. If it makes a black candle to the upside, let's see. So it should be higher low. There you go, made a black candle. And I am done 5.25. And it should shoot to the upside, hopefully, because I'm inside a black candle trade now. And we are done. That's it. First higher low, black candle to the upside, take your 4 points, and done. Okay. It's still going on, but I'm out. That's it. So told you, you have this setup, you will not go wrong. The first higher low is the cue to go up. Done ho gaya. Up 30-20 ka mid-band test hoga. Now I'm waiting for a 30-20 higher low. If it makes a higher low, we'll add 8.5 and we'll go long. So look, 9.5 minus 4.75. So almost 4.5 points. You can take 1 point, 2.3, you're done. So first higher low is your signal to go up. $33 का. Yeah. Order filled. सर 15 है बुल नॉक्स वाला, वही लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड है और ट्रेडो वेट नहीं है, तो वो फिर उसको आपको बिल्कुल प्यार से चलाना होता है. लेजेंड बेस्ट है इसका. अभी है 2-3 दिन, लेकिन यहाँ पर आज ये भी तो ट्रेड डाला ना, ये बिल्कुल ध्यान से डालना होता है कि देखें लोअर लो बना, अगला मिड बैंड लिया, नीचे आ गया, तो हाई लोअर लो और आपके पास लोअर हाई बने तो मिड बैंड में रहे, उसके फौरन बाद हायर लो बने, ऐड करें ब्लैक कैंडल एंड यू विल एटलीस्ट गेट अ पॉइंट आउट ऑफ इट, नो प्रॉब्लम. The moment it turns green, right now first Fibonacci boxes will come at 58.14 now. So Fibonacci boxes are there at 58.14, 58.13. So this black candle trade, hopefully some of you took. Maybe for a point, 2 points, 3 points. Let's see. Oh, look how far it went. The first higher low is your cue to go up. अभी तक सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है ब्लैक कैंडल का, एक और नहीं हिट हुआ. तो 10 ट्रेड हुए हैं टोटल, तो 9 सही गए. एरिया ट्रेड डिड नॉट फेल, and black candle failed once out of like 5 or 6. Fibonacci, let's 58.14, it should do a retrace. And we are back in the game. Look how far the beautiful black candle trade can take you. There you go. Fibonacci boxes are in there. So we are down to 1 point. 1 point mil gaya. 13 से enter होके
हो गया जी, 2 पॉइंट हो गया. That's it. Simple. Just keep working with a like. So once you're done mid-band, wait for the swing retrace extension. Swing is done, look for Fibonacci. Then between these 4 trades, area, mid-bands, swing retrace extension, and Fibonacci, your circle will go over and over and over multiple times. But most powerful is the area trade. Like, so from S3, people bought it, and now it should go and test R1 on both. So my next number to watch for is anywhere from 27 to 30. That's my entry for short on ES. Because 27, sir, वो black candle miss किया आपने. ओए, ये देखिए, पहला हायर लो, पहला, और वो कहाँ गई? वो हम सारे ने तो एक एक पॉइंट लिया, वो हायर लो लगा के वो भाग गई ऊपर. So, फिर आ जाएंगे, फिर उसके बाद फिबोनाची आ गया, वो ले लो. It's okay. फिबोनाची बॉक्सेस भी चल गए आपके, 13 से अंदर से आके पूरे 2 पॉइंट दे गई. So no random entries. So I think pledge is working for most today. कि रैंडम नहीं, बल्कि आप तो एटीएम लगा के वॉशरूम गए थे सर. उन्होंने एमएनक्यू पे भी लगाया हुआ था, आई मीन एनक्यू पे. हाँ एटीएम के बिना नहीं चलता. हाँ ठीक है सर, यहाँ होता है ना तो मैं 100-150 में कट जाना था. बाहर गया था, मुझे नहीं आए, अपने आप काम कर गया. Actually, this is exactly what happened. इमोशंस आ जाते हैं ना. इमोशंस आ जाते हैं कि यार 100 तो आ जाए, और वो 100 पे आप काट दोगे, it will take you down or up and you're like, अच्छा. तो when I put in my trade, मैं पहले जैसे हम लोगों ने 11 ticks का stop loss रखा, sorry 20 ticks का stop loss. तो पहले 11 टिक मेरे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं अगर मेरी डायरेक्शन में जा रहे हैं. उसके बाद तो वो तो 0 पे आ गया, ब्रेक इवन पे आ गया. उसके बाद मेरी टेंशन कम हो जाती है. फिर उसके बाद जब वो 14, 15, 16 टिक पे चला जाता है, देन आई जस्ट लीव इट. जाना तो जाना है. ट्रेल. अच्छा, इसके साथ क्या कर लें, ट्रेलिंग का डाल दें. वो मेरी वेबसाइट पे पड़ा है ना, सुपर एरिया. उससे ये फायदा है कि अगर आपका 112 के बाद जितना बनेगा वो चलता है. So imagine using a trailing on this. The moment you hit a black candle, you see 112. ES पे ट्रेलिंग करता हूँ. ES पे ट्रेलिंग, Nasdaq पे नहीं होती नहीं. Nasdaq is kind of a manual trailing. You won't be able to trail properly. ES has made a bit of a divergence on 1510 because strength does not go up. Strength at the bottom. नहीं, वो पैरेलल निकाल रहे हैं, अभी भी 300 पॉइंट नीचे है उनके लिए, 15,000 है. So because every time I see a 60 number, I just keep reducing from 6060, 5960, 58, and today it was 5760. So I'm sure he's doing fine. So almost 83% that swing has come back up, because that was a 50% move that came down from the whole swing. Previous candle on 60-minute was 60 points. I divided that by 2. So I was expecting price should go from 58.20 minus 30 points to 90. He actually went to 94, which is good enough. So divergence trade. So, but large triggers on 30-20 are kind of okay. Let's see if this divergence passes or fails. That mid-band kind of is working, kind of. Yeah, everything is coming from higher. High worked. Because Are you doing $50 लेके बाहर आ जाते हैं? अगर तो दोनों सेटअप्स ठीक है ना, फिर तो मैं ट्रेल वाला लगाता हूँ, क्योंकि अगर इधर भी हायर हाई है और इधर भी हायर हाई है तो यू कैन एक्सपेक्ट बिगर पुश.
like 30-20 mid-burn. So, but look, that did not hit a stop loss. 8.5 stop loss hota hai na? So it still gave us at least 2 points from here. That's a gap trade on 30-20. So what does that shows us? A higher low on 30-20. That means 8.5 plus, and it will rocket to the upside. Let's see where that number comes to. Right now it's 5807.75 plus 8.5. 5816. Again, price is in consolidation around this area. What is Nasdaq doing? I mean, 160 long here, right? Yeah. Yes, वहां से बनता है. लेकिन अब आपका नंबर चेंज हो जाएगा अगर ये नीचे. If it goes to Fibonacci boxes around 57.99. Fibs are coming on 30-20, 57.99. See. $58.0625 9. जी जी सर वो देखें 15 आपका 30-20 का भी 8.5 पूरा मैं तो मिस हो गया लगा हुआ था. So it made a lower high, first higher low, add 8.5, and it shot to the upside. So swing retrace extension is done. And we're back into S1 zone for both areas. So, but I'm not taking S1. S1 is done, remember. Because it acted as a resistance coming from NS3. So if you have the numbers to watch, just look for 27 to 31. This is where some numbers are sitting.
Sir, 27 है value area, 32 is the 60-minute mid band. If you have a 60-minute chart, the mid band is sitting at 31. So वहाँ पर भी तो mid band acts as a support and resistance, right? So 60-minute is sitting at 31 and my value area is sitting at 27. So it should give us some points from that number. देख लें. So 60 minutes the mid band की हम देखते हैं. Sorry? नहीं ये नहीं है, वो एक नीचे एक और चार्ट है, वो 60 मिनट का है. ये 60 मिनट का चार्ट आपने इसमें भी ये फिबोनाची बने हैं. हाँ वो तो आके चले गए, वो रिट्रेस नीचे से आ गए. ये भी काइंड ऑफ सेम थिंग सर, हर चीज सिमिलर. So black mid band magic bands the center जो black dotted line है. हाँ जी, मिड बैंड जो जा रही है ना, ब्लैक किधर है. So I have added the plug on superareas.com on the main homepage. So if anybody wants to get it. सर मैं वहाँ से मुझे 2-5 पॉइंट तो मिलने चाहिए. तो वैल्यू एरिया है, कुछ तो उसको देना चाहिए. S1 को support management. एक और दो. थर्ड अटेम्प्ट हो रही है S1 to test over and over. So this time it hit 21. But let's see if 30-20 is making a gap trade. If it wants to go slightly higher, I think, let's see. But truly our areas are left mid-band, 60-minute, value area, and R1. Now, next area for Nasdaq is, of course, R1. And let's see what happens with ES now. Because if Nasdaq took a like crazy up, I still don't have a black candle on 30-minute to the downside. It has to make a lower high first before I consider selling. But right now the Fibonacci boxes are tested on 30 minutes, 30-20, sorry. So the smaller the swing, the weaker the Fibonacci boxes will come. So you see they're like, the bigger the swing, but right now your fibs worked again. So green is the best fib cycle. नहीं हर तरफ आते हैं. Fibonacci सिर्फ एक mathematical concept है. So if you just Google what is a Fibonacci sequence, the numbers, how they work in math. So every time you have a swing, like so the way in like math works is you have a push to one side. So swing, whether it's in a motion, so like a swing,
तो अगर आप झूला लेंगे उसको स्विंग करेंगे, उसने जितना ऊपर जाना है ना उसकी 50% retracement. So how far can it retrace back? Like in the physics, 28%. So 75% is the most, like from it will retrace and then retrace and then so here every swing has a Fibonacci, every retrace has that in there. So the moment you have a black candle in the opposite direction, Fibonacci boxes will come. सर वो तो बहुत दूर है, तो वो तो सम लाइक बिकॉज उनकी स्विंग्स बड़ी बड़ी है ना, वो स्विंग 600 पॉइंट की है, तो हम लोग 15-10 में क्या स्विंग है, 30-20 में क्या स्विंग है, 60 मिनट में क्या स्विंग है. अगर आप 240 का चार्ट खोले ना, सॉरी 60 मिनट का, तो swing has been 116 points. Right? It's not a, some users are not trading like us scalping, right? But in order to play a big lot, you need like hundreds and thousands of dollars to be able to play with that many lots, right? Because you're not at sometime if you, I used to say, is if you have a $50,000 account, play with one mini, one. That's how one. That's it. Because then you can hold it because it requires $16,000 to hold it, right? So even when you have an FTMO account, that's what I say. FTMO, the biggest account is $10,000. We go with 5 micros because you know if you want to hold that trade, you have to less risk, right? So anyway, this mid band worked as well, 30, 15, 10, even though there was divergence. I think both these markets wants to go up. How's so I think the word is subliminal in the psychology. So whatever we tell our mind, give it a bit of an instruction. Just keep repeating it, keep repeating it. And then, you know, growing up, our elders used to say, whenever you're writing something, your mind is really, you know, so everything is here just for practicing, right? So in the morning, that 8 lines hopefully will get enforced. And after 21 days, if you don't do a pledge, you're going to feel I'm missing something. All a human brain needs is 21 days of same thing. So if today you're practicing mid-band, swing retrace, 21 days is all it needs consecutively to be able to figure out, hey, I can see swing retrace extension. I can see it, right? So it's, there you go. It's going back in. So I have a lower high now. So 58, 15, 75 minus 8.5 if it wants to go down. Let's see. After a higher high, higher low, I have my first lower high. नहीं 30-20 30-20 में देखिएगा. So lower high बन. अच्छा sorry. Let's see if it makes it 580725. This is my Q. 50725. Not yet.
So that would be a sell stop, guys. No, not yet, not yet. Still 5807 sell stop. dot 25, sell stop. So 58. So picked up, gave me done. Trade is done. How fast and beautiful that trade is. 100%, you got $112. And don't say you didn't make money. This was the setup I was waiting for. Again, getting up, I have a higher high, higher low. First lower high, black candle to the downside, I'm done. Nasdaq में slow रात को, in evening. So every higher high, higher lows, 5 points will come in very easy. अब देखें ये कितनी बड़ी swing ले गए. So you have a right setup, you will not need to panic, right? And especially in short, generally this happens faster. Look how far. सर कितनी प्यारी ट्रेड चल रही है ये अभी भी कर रहे हैं. वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. ठीक है, लेकिन समझ आ रही है ना कि कहाँ हर मिड बैंड नहीं ले लेना. ये वाले सेटअप ज्यादा पावरफुल है लेकिन कम बनते हैं. Swing retrace extension is more powerful than mid band, but it doesn't happen all the time. See, mid band is happening all the time, right? And so the moment I saw this, eyes light up. Hey, I have a lower high after a higher high. So that means my steps are now starting to go down. And trail if you guys can, please. Hopefully. No, it's like a good cry, good cry. So my regret is I was. कोई बात नहीं. देखिए ये एवरी डे हजारों रात को सिम में उन्होंने कहा ना नैस्डैक में लगा के बैठे हैं. हर ट्रेड 5 पॉइंट दे जाता है, हर ट्रेड. और सर लोअर हाई क्यों नहीं लेना? हायर हाई के बाद लोअर हाई लग जाए आंखें बंद करके, लेकिन आंखें नहीं, स्टॉप लॉस लगा के. सॉरी, पता लगे आंखें बंद करके रॉन्ग ट्रेड लगाया हो. उस दिन क्या हुआ, पर्डिया में 5 माइक्रो की जगह 15 माइक्रो लग गए. ओह मैन, नैस्डैक जस्ट लाइक रिप्ड इट अपार्ट बिकॉज 1 पॉइंट पूरा लॉट लग गया ना, बल्कि 1.5 का लॉट लग गया. तो आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग एंड थिंकिंग. आई हैड 5 MES सेटअप. I don't know how it got to a 15 MES. I don't know, maybe a scrolling error. I didn't look and I hit a buy ask. And then 15 micros are 1.5 minis, right? And $2,000 is not enough money for it to. So mid band worked. ये चला mid band किसी ने? I don't know. चल गया था? ठीक है. There you go. See, this mid band will work. It's coming from a lower low. Both setups are lower low. So you have a better chance of that mid band to work on ES. Because both charts are red. Both are coming from lower low. 15-10 mid band. It gave you 2 points. I'm still waiting for, now this candle is, let's see. Which way it goes. Now I need a higher low to go up. That's 30-20 would be nicer, but 15-10 maybe I take a point, but let's see. Because Fibonacci boxes will appear near S1. There you go. Fibonacci boxes are appearing right now at 58.10. So after Fibonacci boxes, the black candle to the downside, I will have a higher low. Lower. Sorry, I will not enter after. I will not enter until I have a black candle to the upside. नहीं, दोनों पे बना है. देखें पहले 30-20 पे बन रहा है ना, 50 है. वो फिब का वही रूल है, रेड के अंदर से और ग्रीन के अंदर से. फिब का कोई और रूल नहीं है. फिब का रूल है बॉटम ऑफ ग्रीन, टॉप ऑफ रेड, 2 points in, 2 points out. That's all the fib has a rule. The bigger the swing, the better chances fib to have a retrace.
There you go. We are inside red now. Let's see if it respects it. In this case, it did respect, but see, problem is we don't know from which fib box it will return, right? हाँ नहीं लेकिन रेड के अंदर से आया ना, लेकिन रेड के बॉटम से. Yes, yes. So. दिन में कितनी ट्रेड होगी लगी होती है बहुत बढ़िया लगी मैं तो ये मर्जी की चलो Because must do trailing. जी एक सेकंड मैं अभी देखता हूँ ये डबल बॉटम लगाया है उसने. So it's nothing yet. It's almost like a lower low. So रुकती है ना मार्केट थोड़ी सी, कई दफा रुकती है, कई दफा नहीं. लेकिन some users will take this double bottom as an indication that अब यहाँ से रिवर्स होगी. तो इसमें से भी आप नंबर ऐड कर सकते हैं. अभी तो आपकी 60 मिनट की दोनों कैंडल्स रेड हैं, ES और Nasdaq की. So both are red. So S2 will become maybe as a support first. Let's see. Time will tell. I'm not doing any because 60-minute candles on MNQ and sorry NQ and ES is both. We are in S2 for ES. Sorry, Nasdaq. Sorry. Far. So 60-minute candle is red here and red here on Nasdaq. So I'm not going long yet. हाँ लेना है. अच्छा ठीक है. लाइव ट्रेलिंग है, सिर्फ 10 दफा. ओके नंबर देना है. नहीं 10 एक्सेप्ट कीजिएगा. आपने बुलनॉक्स का अकाउंट लिया हुआ है ना, उस दिन टीम ने सेट किया था ना, तो आपने 600 बना लिया ना. सॉरी बोल दिया मैंने पब्लिकली. नहीं आपने 1500 बना लिए तो 3000 बनाने. हाँ नहीं मैं उसमें आपको बता देता हूँ कि आपको ना अपना थ्रेशहोल्ड देखना होता है कितना रह गया. ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ सर, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ थ्रेशहोल्ड पहले रिकवर होया होना है, पिछे कोई लॉस होया होना है. ऐसे वास्ते मैं कहना है आर ट्रेडर ਨੂੰ खोल के सिर्फ इस रीजन ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮਿਕ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਦਮਿਕ ਵਾਲੇ $35 ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਰਿਦਮਿਕ ਖੋਲਣ ਨੂੰ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰਿਦਮਿਕ ਖੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਨਿੰਜਾ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਧਰੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਲੌਗਇਨ, ਉਧਰੋਂ ਨਿੰਜਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਰਿਦਮਿਕ ਵਰਕਸ ਈਦਰ ਰਿਦਮਿਕ ਔਰ ਨਿੰਜਾ. ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਰਿਦਮਿਕ ਦੀ ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੈਜਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਡਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਬ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ एक सेकंड, अभी तो कोई चेंज नहीं आ रही सर, इसको जाने दें. बहुत स्पीड से काम आ रहा है, अभी कुछ ना करें, बहुत तेजी आ गई. आई डोंट नो नैस्डैक को क्या हुआ है. वेट करें. और दोबारा चली गया, पता नहीं कुछ बोल रहे होंगे, क्या हो रहा है. ट्रूडो क्या कह रहा है, अभी वापस ले गए जी.
Wait. Don't do anything. It is too fast. Apple plan. Oh, no, sorry. Sir, Apple plans affordable phone. Affordable phone? Foldable. Foldable phone. There you go. Now, 1128. so that means Apple stock went up to the roof. One second. Apple. So I have live data So for Apple has gone to 236. 236. So Apple took everything to the upside, but let's see. Yeah, Apple went up. So one stock can. So wait, let it. So made a lower high. Do we have a black candle to the downside? Let's see. It tested as, but our areas got respected, by the way. Because no bro. Okay सर, ये आपका लिखा हुआ है अकाउंट बैलेंस, ठीक है. एंड में एक कॉलम है ऑटो लिक्विडेट थ्रेशोल्ड, ठीक है. इसको कॉलम को मैं ना आगे ले आता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एपेक्स के ज़माने से हमें याद है, ये साथ साथ करना पड़ता था. ओके तो ये आपके लिए दो इम्पोर्टेंट है. ये मैं तो आपके पास नंबर है 51,523, आपके पास लिक्विडेट है 49,025, तो आपके पास पूरा 2500 पड़ा हुआ है. तो ये आपका थ्रेशोल्ड पूरा है अकाउंट लेकिन आपने आधा टारगेट पूरा कर लिया है. 3000 में से 1500 बना लिए हैं और आपके पास पूरा टारगेट है, मीनिंग के थ्रेशोल्ड पूरा है. So सिर्फ ये वाली ऐप आपको चाहिए to calculate. So the formula is account balance minus RO liquidate threshold. But this only is for rhythmic accounts, right? So how to calculate? हैं? नहीं आपने अभी 1500 बनाए ना, 3000 बनाने हैं तो नहीं. आपके पास जब आपने अकाउंट खोला था आपने 3000 बनाने थे और 2500 था, ठीक है ना. अब आपने 1500 बनाने और 2500 है, आपका थ्रेशोल्ड पूरा है. अच्छा, मतलब लॉस नहीं लिया कोई. हाँ, अब मैंने जो लॉस लिया था वो रिकवर कर लिया. अब आज आपका लसे अकाउंट नहीं आए तो आपने बनाने 1500 हैं और आपके पास लूज करने के लिए 2500 है. नहीं लेकिन अगर लेस से कई दफा नीचे भी जाता है ना, तो अब आपके पास आधा टारगेट रह गया है. टारगेट 1500 रह गया है, थ्रेशोल्ड पूरा पड़ा है. कहाँ से स्टार्ट किया था? 3000 का टारगेट से 2500. अब आपने उसको अपने फेवर में ले आए ना, तो अब तो ये सिर्फ थ्रेशोल्ड कैलकुलेट होता है रिदमिक में इस तरह, तो क्योंकि जब आप ये ऐप खोलते हो निंजा उधर से बंद हो जाता है. So that's why I don't personally like rhythmic accounts, but you're doing good. Where do you see your for Trader weight? Rhythmic? Well, Rhythmic is R Trader app. R Trader, R Trader Pro. Remember the fast track trading app we all used to use for Apex? Let's see which way. Fibonacci didn't respect the bottom range, but it's okay. Let's see if it respects the 5814 again, the fib. So the Apple One announcement kind of market to go chaotic. Anybody who's trading, take profit. In your pro account, please don't take a trade tomorrow. 8:30, everybody got an email. If you are in the take profit funded company, they have sent an email that tomorrow don't trade at 8:30. They're not going to count it. So just for take profit. If you PA account. Must be out of. So take profit is kind of interesting. They charge you $105.
If you finish your exam within 30 days, there's no fees. So they want you to pay you 105, right? And then there's no fee. And Again, 1500. You have to make. so that's the good account, I think so, because like and it's legit बाद अपन ये करना से 150 देना पड़ा. हाँ जी, एक और सेटअप आप लोगों ने मिस कर दिया. लोअर हाई के हायर लो के बाद एक और लोअर हाई आई और ब्लैक कैंडल टू द डाउन साइड बना गई. डोंट मिस दीस सेटअप्स. इतने पावरफुल सेटअप्स बन रहे हैं. वो देखें, वो आपका कितना प्यारा ब्लैक कैंडल बनी. लाइक ये मिस हो गया आपका सेटअप. कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा. It is craziness right now in the market. चेंज कर तो टेक प्रॉफिट में बताना 75. हाँ, वो चेंज कर दिया. अब उन्होंने स्लाइटली डिफरेंट मेथड बनाया. So the market has quite a bit of volatility right now, guys. So be careful. Which way it's gonna go, we have no idea. 1 second it's up, 1 second it's down. Nasdaq and both are another mid band, another lower high. नहीं सर, एरिया हो सब कुछ हो चुका है. हमारे पास सिर्फ वैल्यू एरिया पड़ा है ऊपर वाली साइड से. सर हाँ, ये तो लाइट थ्रेशोल्ड हलेगी है क्या? हाँ जी. So I need a higher low for me to go up. There you go. Both candles are red in 60 minutes, so pressure is changed. We're back into S1 zone. S2, sorry. S2, S1 for Nasdaq. Or S2. We are in S2 for Nasdaq now. Back to S2.
Going back to just more. Didn't touch mid-band so much. $15.10 is in divergence. Divergence did not pass. Now again consolidation. सर काउंट लेना चाहिए ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ? उन्नो सारा Okay. भाई पिछले मैंने दस क्या सीगा कि अपने ਉਹਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ हाँ बुलना कर ला मैं एक सेकंड. कोई चक्कर हाँ फिर वो बारबर का भी करने दे बारबर से भी कभी दे ठीक है अभी आ रहा है वो ये है यार Back into S2, black candle. सभी ब्लैक कैंडल सेटअप से ना फर्स्ट लोअर हाई हाँ जी हाँ जी हाँ जी. वो हो गया था ना, मैंने कहा ना वो गिरी तो इतनी गिर गई कि वो आपका ट्रेल करना. उसने रियलाइज की हाँ हाँ वो सेटअप पूरा हो गया. So 15,939,10289. Again, mid-band worked, beautiful.
तो मजा आ जाएगा ये आज स्ट्रीम है एक लो खत्म कर महीने का पूरे महीने का रिटर्न मिल जाएगा एक ईयर यहाँ से अगर एक्सट्रीम है कहीं Let's see testing mid-band 30-20. एक प्रॉफिट में माइक्रो करो मिनी करो ये तो ये एक अच्छा इस तरह का सेटअप मिल गया ना, हायर लो लोअर हाई वाला, और ट्रेल करना शुरू करो. I don't know, I missed it, I was paying not attention, but this was the best setup right here. Right here. From here on, it just shot down. Higher high, higher low. First lower high means I am not going up anymore. Now we have a 1510 first higher low. Remember, first higher low 1510 पे आ गया है. ये सिग्नल दे रहा है कुछ हमें. नहीं जी, अभी नहीं दे रहा कोई सिग्नल. नहीं हाँ, लेकिन अभी ये 30-20 में डाइवर्जेंस शायद लगा दे. Look, 30-20 में लोअर लो बन गया. अब डाइवर्जेंस बन रही है जी, to the upside. Now 30-20 has a divergence to the upside, waiting for a black candle to the. Or S2 again. हाँ, तो 22 लेकिन खत्म हो गए, डाइवर्जन नीचे आ गए प्राइस.
हम्म अभी कोई मूड नहीं है ऊपर जाने का। Back to expected low.
S1, S3 to S1, back to S3. Incredible. Yes, sir. Any desk आपका बोलना है? 971 Yeah. 104. Whether mid-band worked. Need a higher low for me to go up. Sure. higher low. एक देर में higher low हो जाएगा ना? Yeah, now get ये पहला हायर लो आया है. now get higher low. जैसे पहले और हाई था उसके अपोजिट. Brother, जल्दी करो जो सोच रहा है. उसमें निकल जाएगा, ट्रेन निकल जाएगी. Sorry guys. होने को तो ये वाला ट्रेड जो है उसको push up big time. Big time. Like so 576675 plus 4.75. Let's see. Waiting for it too. But if it makes a lower, we're not going up. Yep. Okay. No, so that is failed. हाँ ब्लैक कैंडल अब तो नहीं बनता ना, क्योंकि वो नहीं, वो तो लोग वो नहीं, वो मिड बैंड ट्रेड है, उसका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं. अभी तो मार्केट गिर रही है जी फुली. या नैस्डैक कहाँ से आई? S1 से वापस आ गए. यस. नहीं पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो. तो आपने एक बुलनक्स और ऐड करना है? ओके, यहाँ से कर लेना. ये देखें, यहाँ जाए सुपर एरियाज. बैक टू एक्सपेक्टेड लो. नहीं उन्हें कुल है मेरे ख्याल. ये देख रहा है, अभी तो मिड बैंड टेस्ट हो रहा है.
अभी तो मिड बैंड चल गया आपका 100%। I think they're checking now with waiting more than you expecting. फिर कार्ड नंबर डाल। फिर कार्ड पा दे। ओके, नो प्रॉब्लम। So I need a higher low candle to go to up. Higher low on 1510 traffic. Yes. I need a higher low on 1510. Then I will add 4.75. Then I'll. Right now I'm not taking any trade on. There you go. I have first higher low though. 5763. Nice. There's no going up yet. हाँ जा रही है। नैस्डैक निकल नीचे, नैस्डैक एक्सपेक्टेड लो की तरफ कैंडल खुल रही है ना। ठीक है। नहीं, आई डोंट थिंक सो सर। लोअर लॉस से बंद कर देना था। लेकिन स्ट्रेट मार्केट नीचे ले आए, वो एक्सपेक्टेड लो पे ले गए। सर एक्सपेक्टेड लो पहली दफा ये एरिया हिट हो रहा है, फर्स्ट टाइम। लेकिन नैस्डैक को आने दें, नैस्डैक 30 पॉइंट और गिर जाए, वहां से बाय बनेगा। नैस्डैक 30 पॉइंट और गिर जाए, एक्सपेक्टेड लो पे आ जाए। सर दोनों आपके 50 पॉइंट का फर्क है, पहले ये तो देख लें कि क्या दिखाती है। हाँ 50 वाला रेंज चल गया आपका।
जो ES का बॉटम रेंज था ना 50, that worked. हाँ वो भी चला अच्छा नहीं बोलती 70 पे वापस चलेगी आएगी नीचे तो सब कुछ करता ऊपर नहीं जा रहे हो तो 150 के 100 जा रहा है जी, बड़ी स्पीड से जा रही है, वो रुक ही नहीं। नैस्डैक तो आ गया जी। तो अब देखें 150 और 100 में काफी फर्क है। तो नहीं अभी तो नैस्डैक गिर रही है। 44 का नंबर आ गया जी आपका। Did our internet just go out? Yeah, internet just went down. Hotspot, guys. सर हो गया सर हो गया। अब देखिए फिबोनाची बॉक्सेस कहाँ से जाती है। लेट्स सी। Nasdaq touched सर 59 55 तक गई। So fib boxes are up there at S2. No, fib तक जानी चाहिए ना। 70 अगर सेल करना है तो S2 के अंदर नीचे से आ रही है। अब 50 ना लीजिएगा जी Nasdaq का। Don't take because it went as close, very close to like 157, right? So now the below number, if it tries to go there. So 44 was the number that we had in mind a few days ago.
क्या हुआ पॉजिटिव में होना वो शेयर सिंह का क्या हाल है सर मैं माइक्रो में कर रहा हूँ वीडियो ऐसी है कि जिसमें ये सारा ये टेक्निक सब कुछ सर सुपर एरियाज के अंदर मैंने हर चीज की वीडियो रिसेंटली या कुछ सारी है पुरानी रीड्स हर चीज में डालूंगा वही इंफॉर्मेशन Now we have first higher low in 3020. First higher low in 3020, guys. Higher low आ गया first 3020 में. So we need a black candle to the upside to shoot to the upside. But we need a black candle first. when it was going down it worked for me like 5 times Yes. So but दोनों के कलर बैकग्राउंड पर्पल है. ठीक है हमने तो सर ब्लैक कैंडल का उसका मिड बैंड से कलर का कोई ताल्लुक नहीं ये स्विंग रिट्रेस वाला ट्रेड है 8.5 बाई करेंगे ना बाई स्टॉप बनेंगे ना ब्लैक सो यू हैव अ फर्स्ट हायर लो 3020 जी मेरे को लगता है टूडो ने बोला ना उससे सारा काम होगा काम चलो टूडो ने क्या बोला टूडो ने क्या कि मैं नहीं अपना रेस्क्यू को वो तो सुबह का बोला हुआ है यार 11 बोला सबसे बुरा हाल है 56 सर yes सर हायर लो no 57 48 plus 8.5 57 56 50 is your black candle to the upside. So right now mid band, still waiting for my black candle to the upside. Now number changed. 57, 47, 25 plus 8.5. So अभी तो बिल्कुल 57.44 was the lowest number of the day. Right now still magenta, so keep selling.
So market is down 101 point on NAS, 500 point on ES. Sorry. नहीं आज ES 100 पॉइंट नहीं चाहिए. अगर वो भी 500 के करीब ही है. हाँ वो भी 500 के करीब. 500 तो ये नहीं किया कि जो अपने जो नहीं पता है वो 437 है. So that number is going to change again, 57, 46, 50 now, because अभी एक्सटेंशन नहीं बनी उसकी. Now we are in expected low truly of Nasdaq. Almost 5 points to go. 52, 50. 51 में लगा था. है जी हो गया पहले लग चुका है पहला वाला. नीचे वाला बनता है 100 वाला भी नहीं करता. यहाँ पॉइंट का फर्क है. We need 57, 45, 25 plus 8.5. ठीक है जी दे गया थोड़े से पॉइंट आपको. 2 पॉइंट मिल गए 8.7. Now it's a mid band and it should shoot up. It's trying to shoot up. That black candle. Done, ji. All right. All right. Happy everybody with that trade? Good. Okay, you no problem. But setup पूरा हो जाए आपका ट्रेड नहीं नुकसान देगा, guaranteed. ट्रेड नहीं खराब करेगा, आपका सेटअप पूरा होना चाहिए. ठीक है नहीं खराब होगा ट्रेड. Another, so just to kind of get up and see this. So what did we do here? We had a lower lows and lower highs. First higher low is my Q. I'm going up. I added 8.5 to this and we went up long. 2 points, 3 points, 4 points. We had 4 setups like this. So these again are called SRES. 4 setups. You will not go wrong. So, and we did area trade. So only thing left on the table for us right now until 5 o'clock is remember this number.
58.27 is still valid, and then extreme low. These are the only numbers for us are valid until now. Sorry, वहाँ से क्योंकि वो जो बहुत दूर है सर होगी सर S3 almost R1 back to S3. This is like again they're playing games, man. Whatever they speak, then you have this thing happening. So just keep your setups correct, please. अब अगर 15 दिन में इसमें कमी होती है तो इसमें $2 दे दिया था $10 निकल जाओ $1 का ट्रेडिंग $1 की $1.5 तो आगे $8.5 तो आगे माइक्रो मेजर मैथड बना सब ये तो मिला बिल कम रहता है मैं 115 पे डाला मैं पॉजिटिव उसका 15 मैं तो भाई तो मैं भी मेरा लॉस पहले मेरे 20 अच्छा ऑन दैट के बाद मैंने मैक्रो में तो 100 को मैक्रो में बना अब वो चीज समझ नहीं आ रही होगी वो तो मैं आपकी एटीएम की रिक्वेस्ट भेजिए तो मैं आपको शाम तक बताता हूँ क्योंकि वो हमने ना टेम्पररी डिसेबल कर दी थी। हो ये रहा था कि हर बंदा हर ब्लैक कैंडल ले जा रहा था। वो ब्लैक कैंडल लेनी है जिस तरह हमने आज 5 ब्लैक कैंडल्स ली, राइट, और सारी सही चाहिए, राइट। फिबोनाचीज भी चले, मिड बैंड भी चले, एरिया भी चले, तो सिर्फ वो ब्लैक कैंडल अगर आप ऑन रखेंगे ना वो हर ब्लैक कैंडल बाई करता रहेगा। सो देयर इज अ यू नीड टू मेक श्योर कि जब आपका सेटअप सही आ जाए, lower low, higher low, black candle, then enable it. Otherwise, last time we gave it as a trial, people destroyed accounts instantly. So it's a dangerous because it will just take a trade every black candle. We don't want that. In this case, you are ready. The price came to higher lows. You can kind of get ready that, hey, where am I right now? Again, it went down. Let's see. It's inside the back into the expected low. Now the lower range, please. Lower range of Nasdaq. It's going down fast and hard. हाँ, इवनिंग इच करो। मैं तो सुपर एरिया तो उत्थे लिखा आएगा साइन अप फॉर ए फ्री ट्रायल। नहीं ये नहीं चाहिए, शाम में जरूरत पड़ेगी। नो प्रॉब्लम। That is annoying. That mid band worked, no problem.
Let's see if it makes the first higher low. Not yet. Still, Nasdaq wants to push back in. Oh, okay, lower low, 42. Again, mid-band worked. Because the price has gone, Nasdaq has gone inside to 132. $34 points to go. 34 points. Let's see. $30.20 mid-band worked. I need a higher low first. हाँ जी हाँ जी अब जा रही है नैस्डैक थोड़ा थोड़ा वापस की तरफ जा रही है All right. ले गए जी वापस okay straight from 38 Nasdaq is done too ES is done as well
Waiting for my, there you go. 3020 have a new setup now. Higher low has come. So be ready. 3020 has a higher low now. $57.46 plus 8.5, $57.50, $4.50 is my cue to go up. Until then, not doing anything. Sir, 8.5. 46. But if it 46 goes down, we gotta keep adjusting that 8.5. Yes. Because right now Fibonacci boxes are sitting at around 43 of green, the retrace. Possible. हाँ, क्योंकि एक तो हायर लो भी आ रहा है, एक फिबोनाची बॉक्स भी वहां खड़े हैं ना. Now it's from 45 to 8.5. Remember that. That's where the black candle will form. $57.45 plus 8.5 is $53.50. That's where we should have a black candle to the upside. Right now, it's still struggling. Nasdaq trying to decide what I want to do. नंबर बदल गया जी. Because it's inside the Fibonacci right now, right? Still Nasdaq wants to push inside. 40 again.
इसमें ना डाइवर्जन टाइप बड़ा नहीं नहीं, कैंडल के बाद देखेंगे, उससे पहले तो कुछ करना ही नहीं। नीचे लोअर लो बना गया, मिड बैंड की तरफ चले जाएंगे, हायर लो बना लिया तो ब्लैक कैंडल से चले जाएंगे। लेट्स सी। Because it has to break the 37 to make a lower low first. Sorry? No, it was slow time. It's too fast. हर फ्राइडे मेरे अकाउंट उठते हैं, कल मैं ट्रेडिंग करूंगी। No, it's okay. Like if you know setup same होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं सुबह करें शाम करें, सेटअप सेम हो, लाइक 24 घंटे ट्रेड करें। जैसे ही अब 59, 30, 57, 39, 75 plus 8.5, waiting for a black candle to the upside. Done, G. Done. How fast it made the candle, how fast it filled in. So please don't say it doesn't work. It's done. Trade is done. Okay. I like to shut it up because I'm going revenge trading now. Like so. No, because I'm up to $1,500 on each account. I gotta stop because I know I will lose these accounts. Because when you're that much trading, what will happen? I have to stop now. Because I took that, Vikram bhai, फिर miss कर दिया आपने. यार इतना miss कर दिया यार. Anyway, क्योंकि 39, 8.5. नहीं ऐसे पहले ही लगा के रखना होता ऑर्डर,
और उसको नीचे लाते हैं, जिस स्पीड से आ रही है. Good. I hope I don't have any orders pending. So, eh? I also got some money. Good, good, good. कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा देते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा, कोई मसला नहीं है. You take this 5753.75 minus 8.5 and you get your order. Right now it's bottom of the bar, it should go up. That doesn't count, by the way, because it's not, previous is not a lower low. Some, yeah. नहीं, मैं नीचे वाली क्या है उसकी बात कर रहा. I didn't take that candle to the downside. Now you need a lower low Take care जी. with a lower high. Go down. Because it's a higher low, right? And 15 candles both they are higher. So you can either move up the other one or 8.5. Hi, how are you? कैसा रहा यहाँ पे? आज रहा यहाँ पे? आपके बहुत क्वेश्चन है ना कल? There is a lot of question. Which stock is hammering this down? Let's see. Tesla 264, Nvidia 111. Amazon 201. Every single stock. $263 से भी नीचे आ गया था जी. Tesla lowest low it touched was 263. Again, $15 down. Just the way it was going up is the way it's going down. Oh, 36. So Nasdaq is 20100, guys. That's the number to watch for. लगाने दें जी, लगाने दें. 36. सर यही न्यूज़ है कि ट्रम्प है प्रेसिडेंट है, स्ट्रीम लो की तरफ जा रही. जाने दें, जाने दें. 100 नैस्डैक का बन सकता है, ऑलमोस्ट आ गई 100 पे.
So Nasdaq today is down 550 points, Nasdaq, and still falling. Like तो 4 डाउन हो गई। हाँ जी, sir, 109, 108, 107. Bottom range is 75 is actually the number I have in mind for Nasdaq, because that's the previous low 3 days ago. 75, 20,075. लगा दें। सर स्टॉप लॉस लगा के जहां मर्जी लगा दें। बाय 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 नीचे अभी नैस्डैक नीचे गिर रही है, एक्सट्रीम लो पे आने दें। तोड़ गई है सर। नहीं 108, 107, 106. लगा दी ना। 100 आ गया जी, 100 लग के पूरा 5 पॉइंट दिए उसने भी। लेट्स सी, दस पॉइंट दे दिए, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट हो गया जी ना 100 के। डन जी, 100 वाला ट्रेड डन हो गया नैस्डैक का। उसने टैक्स फोरेन टैक्स लगा दिया 25%। हाँ हाँ सर, आगे पीछे लड़ाई चल रही है। एक्सपोर्ट पे लगा दिया ने। Came down more. Now there's a divergence to the down. Let's see. 75 for Nasdaq, the new number, because that's the previous low. Mid-band worked again. Now we're waiting for Nasdaq to pull up. So has it crossed S2? नहीं 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 सर, अभी तो एक्सपेक्टेड लो जो है, दोनों एक्सपेक्टेड लो से नीचे। Oh. इसका लो कितना है? 5700। किसका? मैं बताता हूँ। Should go to at least 57.46. That's the Fibonacci boxes sitting there.
30-20 mid-band worked. I need a higher low now for a 30-20. On 30-20, I need a higher low. They're making a divergence now below 29. Let's see. 98, 99. There we go. We have a black candle to the downside. That will be my divergence black candle because strength is not going down on 30-20. Sorry? Mid-band is done already. 30-20 mid-band is already done. I just need a black candle to the upside now, hopefully soon. On 30-20. Wants to make. There you go. Black candle to the upside made. Now take me to the moon from here. Done, ji. Congratulations, everybody. Hopefully, everybody has made money in this candle. Good? There you go. See, just wait for the setup. You will not go wrong. Wait for the setup. Done. I think I gotta go. Now I can call करके trade करवा रहा हूँ इससे. Just pick a method. Mid-band, black candle, Fibonacci area. 4 of these are the best trades to work with. And the price has gone ridiculously done. If you can trail. आप नहीं wrong हो गए. जो मर्जी account हो जाए जी, पर्डिया हो जाए, Apex हो जाए. So now these mid bands to the upside should start working. Should. I come here every day. I come here every day. तो मुझे पता है कहाँ पर है. That mid bands are now. ले लिए. ये ना कहेंगे अब 9 से लेके अब तक सिर्फ 100 ही बनाया है इस ट्रेड में. ठीक है because that नहीं ठीक है इस ट्रेड.
No problem. इस करंट ट्रेड में 100 सही 2 पॉइंट निकाले ना, ठीक है, ठीक है, एक हो दो वो, ये अब आप आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्फिडेंस आता जाएगा. And it's Nasdaq has gone up now. So the rule is lower low, and then you have a lower high. After that, the first higher low is your cue to go up. So take your 15-10 or 30-20 black candle. Video number 1 hour 25 minutes into the video, Daniel explains it like butter. देखिए क्या इधर लगा देता हूं. सेटअप कैसे बनता है. प्राइस नीचे गिर रही है, लोअर लो, lower high, another lower low. Doesn't matter. One lane, second lane. The moment I have another, let's say, this is how Daniel explained on the chart. The moment you have a first higher low, this is your cue that I'm about to go up. So you will start calculating your 4.75 or 8.5 from this number. So the moment I have a black candle to the upside, that means I am shooting to the upside. And in the opposite, you have a higher high, price went up, it made a higher low, maybe made another, makes a lower high. So I need a black candle to the downside. So that will tell me that my trend is about to change. So hopefully everybody made tremendous amount of money in these 4 setups today. Thank you very much. I'm going to call the live stream off since you guys soon. Handy? Zoom? Sorry? हाँ, ये सारे Zoom पे जा रहे हैं, हर तरफ जा रहे हैं. So we stuck to our pledge today. That's the good thing. And I posted on superareas.com. It's there. Whether I'm not here or here, just, अगर कोई ट्रेल कर रहा होता ना इस ट्रेड को, उफ मैन, 25 point minus 25.75 minus 8.5. This was a 17-point trade. आपने 2 लिया ना, it's okay, no problem. 2 भी बेहतर है 0 से. I always say any day above ground is a good day. That's it, because we're not dead. So because once you're dead, you're dead. So any day above ground is a good day. So yesterday I was going home and I got pulled over, and the guy, he gave me 2 tickets back to back, right? So because my kid wasn't wearing the seatbelt, right? And they saw. And so no, I have tinted, but she pulled me over on the stoplight. So she's like, come over, I want to see something. I'm like, all right. अच्छा अच्छा पता नहीं क्या, क्योंकि मेरी गाड़ी टिंटेड है, सब कुछ बैक सीट में बच्चे. And then I didn't have my insurance card because I'm like, all right, so that's a $65 ticket, and then 240 with 2 demerit points is my kid's child belt. So I straight from 410, I went to the traffic cops and I'm like, here's money. Can you fight it, please? So they said they will drop the charges, but no demerit points. That's all. So the ticket was $250, and to fight the ticket is $250. So this is corruption to the maximum, right? So I'm sure that this is how they work, right? So they're like prosecutors, and they're like, all right, So 30-20 mid-band worked.
Good, man. Thanks for teaching these newcomers. Stick to one method, mid-band. Higher highs, keep buying mid-band. नहीं, लेकिन मैं 6-7 टॉपिक्स मर्ज करता रहता हूँ ना. No, I just told them to stick to one and chill. Both charts green, higher high, every pullback buy. नहीं, वो मैं pressure भी बता रहा हूँ. अच्छा, ठीक है. But as long as pressure to be same on the both sides. perfect. Because here I'm teaching 7 or 8 concepts, right? So yes. Just doing Perfect. One thing. method for 3 days really helps. Excellent. And please don't come back and start doing my methods now. So stick to one study, because what will happen is I have users who go to 5 mentors. They learn nothing. Because every mentor teaches one thing, right? Yeah. So my setups are different. I'm teaching, like Daniel will teach you very overall. Then I will come and then you pick a mentor that teaches you one thing specific, right? The Majid Bhai teaches gold. 30-20 gold is his thing, right? I don't like gold. That's a completely different thing, right? So I do Nasdaq areas and I do these 3 methods on ES, right? So, but for me, you have to be fast, because remember, the black candle calculation is happening fast. Fibonacci's are happening fast, right? So I was talking to Daniel, maybe we need a 60-40 chart now, because back when we joined, it used to be 403 and 805. Then we dumped those 2 and we went to 15, 10, 30, 20. The way ES is moving now, we can look at 30, 20 and 60, 40, because it is too much fast, right? So नहीं, आजकल तो पिछले 15 दिनों से तो हाथ ही नहीं आ रहा 15-10. Exactly. और Nasdaq कहाँ जा रही है जी? आज भी 500 पॉइंट डाउन है जी. एरिया कोई बात नहीं, it's okay. There's always that next day, right? So आपने लेजेंड पास किया? हाँ, वो सर्टिफिकेट भी आ गया. ठीक है सर. तो अब एक सेकंड. नहीं, आप उसको फॉर्म भरना शुरू करें ना. नहीं, वो मुझे एक दो चीजें देखनी. अच्छा, जो बताते हैं देखते हैं. By the way, somebody missed the black candle trade to the downside. 15-10, you had a higher high, higher low, and then first lower high, what I just explained. So that black candle came to the downside screaming. So whether you do this on 30-20 or 15-10, method is the same. लेकिन 15-10 में ये बना higher high, higher low, lower high, candle to the downside. Thank you. No problem, ji. Best of luck, ji. Take care. I'm gonna finish. All right. Okay, sir. Can you go over areas one of these days? Okay. Best is Daniel's video number 5. That covers areas like much better than I can. But the quick 1 minute area is you have levels, right? Yeah. So let's suppose you have R1, S1, S2, S3, and then R2 and R3. These are called support and resistance levels. Yeah. So our computer software predicts. So let's pick a price. So let's say 6,000 is a price, right? And then at the bottom you have 5,900. That's 100 points. And then you have 6,100.
any market situation, price will never travel in a straight arrow. It always goes up like this and down like this. Right? So our computer software predicts that at which point the trend should go against. So like today, for example, when the price was falling, it was falling like this. It hit S3. Now our computer today said 5760 to 5750, it gave it a range. That if the price goes in here, it should bounce. Yeah, no, it doesn't matter. Like, but it should. So few points are sitting inside the area zone. So in our case, this is against the study. So the study has told you red to sell, green to buy. These are called counter trades. You will always buy when the chart will be red. Because what will happen is you're like, price is falling, but our computer is saying at certain level, it should do a bounce back. Just like this is, if I have a ball, it's falling, but it has a support. This floor is my support, right? It will bounce back up a little. It can still penetrate through this, but it has a bit of a support. So all these levels, rather they're in the morning, they're listed as R1. Like, so what happened was market went from S3, it went to S1, and then it bounced down here. So today the market played like this. In the morning, it started to fall down. At S3, you took a trade to buy. That is the first time you will do a trade against the color. You're not selling anymore in that zone because the computer has said by these numbers, please don't get involved in selling anymore, doing buying. So that's called a support zone. So what happened was from here, it bounced back up. It stopped a bit at S2 and then went to S1. At S1, even though these are support, but it acted as a resistance. So every level, if you watch Daniel's lecture about area, like support and resistance, everything acts like a support and resistance depending on where the price is coming from. If the price is coming from S3, remember, I think you have all these lectures. He writes like this, RS. So he writes it like S and other way, R and S. And then S and R. So every single place acts like a support and resistance. So when the price is coming from the top, it's support. When the price is coming from the bottom, it's resistance. So this morning, when we came in, we have a habit of writing 4 or 5 things. So Vikram Bhai does an excellent job. He writes night session high. What was the price? That's called the range of the day. What was the price? Was the highest level. Then he wrote something called night session low. How low the market went down when we were sleeping. Then he wrote another thing called value area top and value area bottom. That's another support and resistance numbers. So between them were some trades, right? So again, it's one of those methods. Which one do you pick? What happens again is you pick one method and then you start to add in. I have a lot of guys who are doing black candle, then they add background, doesn't work. You please, every single method has a different thing. That's what I said. You guys came back into this room, it's going to mess up your whole 3 days. So if you are doing what he has taught you and you are doing fine, keep doing. Because what will happen is area trade takes at least 3 months for you to understand. Because so do the basics first. Basics is I want you to make a couple of $100. Yes. So I told them, do 3 trades. 3 trades. And show me how you can do it. Exactly. But that's perfect. So again, price is coming from higher high. Everything is green. Buy.
Price is coming from a lower low, everything is red, sell. Yeah. Yeah. Don't think anymore, right? So that's where Can the I suggest something? yes. I think a new person Yes. shouldn't even be allowed in this room. It's okay. I'm So telling you, no. you get a little mixed up. There's a lot of stuff going So on. what happens is you have to understand every student has a different caliber, right? We had a rule. Yeah. 3 months, nobody will get a funded account. It takes 3 months. You know how people, like before Ninja 7, like Ask Tahir Bhai, 3 months, you weren't even allowed. He wouldn't even give you the number on GFF. Yeah. It took 3 months for you to figure out what a night session is, what a CPI is, what is the news. Because there are lots of things happening, right? So my recommendation, pick one method that he teaches you. Green to buy, red to sell, right? So, and what we are trying to do as a beginner, you will take the first day orientation with me, and then you'll sit in those 2 rooms. Yeah. So we are absolute beginners. We are asking not, you do the first day, yes, you take my orientation, kind of tells you what to do. Then you get moved to a little bit of an entry level. Because there's a big gap between here. I'm discussing 9 types of trades. Some can pick up faster, some cannot, right? Because you have to understand, I have to do Zoom and everything else, right? So what Sunny, what Majid Bhai, what Vikramji are doing is great. To kind of takes a little bit basics at a time, right? So we need the room. That's the trend room. That's the mid-band. And this is all of the above. Well, try sitting with Daniel. He's like, "Abhi tak samajh nahi aayi." So that's like, even for me, when I get stuck, I go ask him very specific question, and he'll say, "All right, this is why I did what I did." So I only know about 1% of what Daniel knows. Honestly, he has for like 60 years of experience, 40 for sure. So if I know only 1% of it, so there's so much more to learn. But the 4 or 5 things I will teach you are good enough to make money. Yeah. Like that method of mid-band. Yeah. Good enough to get you through all the legends, EAs, PAs, making money. Yeah. Then you're like, how do I make more money, right? Then you start coming at exploring different options. What is an area trade? What is a black candle trade? But please don't switch mentors too quickly, because I've had one user online who went through 6 mentors, learned 0. Yeah. Because what happens is his methods are working. He hasn't. Remember, all of our mentors, they have a payout, meaning that they know what they're doing, right? Yeah. So. One last question. Yes, absolutely. Everybody's talking about the 9:30 trade. Yes. And okay. Again, that's everybody who's been here for quite some time. Yeah. Between night session high and night session low, there's something called the midpoint. Yeah. If the price opens above the midpoint and base is up, chances are it's going to go and touch night session high. How do you know that midpoint? Oh, it's already like you have a price. So first thing is, let's pick a number, 6,000. Yeah. Let's pick a number, 5,500, 5,000. What would be the mid-range? 5,500. That's the midpoint, right? Okay. So you open your computer at 9:29 and say where the price is. Okay. So you don't even have to do this anymore. In the charts it says base. Yeah. If the base is down, chances are it will go night session low. Okay. If the base is up, chances are. Okay. So that's called the 9:30 trade. Yeah. Rarely it's happening at a midpoint right now. These days, last 10 days, price opens at S2. Okay. Opens at like S1. So this is only optimal if you have a good range in the middle, and then you're like, all right, so, or the other way, right? So mid-band. So because this, again, if I can put one thing in your brain, out of the 10 ways of trading, every single trade is happening with the frequency. For example, bottom of the bar trade is happening on every bar. Yeah. So from 9:30 to 4, that may happen 1,000 times. Yeah. Bottom of the bar, then top of the bar. So next frequency is black candle. Your black candle happens probably every 5 minutes, right? Yeah. That's your mid-band trade. Yeah. Then you have a 30-20 mid-band.
then you have somewhat like a black candle to upside or downside. So the longer you wait, so that's why we say when you get to area, you don't need anything. Today, price went to expected low. He took a long, I took a long, and that's it. We were done. Because we are not trading mid-bands. The primarily two trades I trade is swing retrace extension and mid-band area. That's my two of the favorite trades that with ES that I'm doing. But for beginners, if you look at the lecture that Daniel has given you, he tells you one thing: place your order at a mid-band, take your 2 points, 3 points, and that's it, right? So hopefully that. ठीक है जी, तो अब वो ऊपर जानी चाहिए नहीं, अब वो बढ़ाएंगे वापस. देखे ना इतना ड्रामा चल रहा है यार. So only Mexico. अगर Mexico में कितने इधर भी कर दूँ. ये तो हाँ, या वही मल्टीपल ही डाल. लेकिन बना ले और थोड़ा सा. या. लेकिन ये तो गेट बंद कर दिया था बॉर्डर पे क्या? Mexico ने. और क्या? ठीक है भाई. America wants Mexicans to pay to get a visa. चली गई जी. आप नीचे भी हो ऊपर नहीं, मैं तो किसी ट्रेड में नहीं हूँ, तो आई डोंट केयर किधर मर्जी जाए जी. एक सेकंड पहले मैं सिर्फ देख लूं मेथड वो चला नहीं. लोअर लॉस नहीं वो उधर नहीं बनाया उसने. हाँ हायर लो आया, लेकिन वो अगर आता ना लोअर हाई के बाद, वो मेरे लिए ज्यादा पावरफुल होना था. लेकिन एटलीस्ट आज मैंने 5 सेटअप दिए हैं आपको, पूरे 5, और इतने ही बने हैं. और ब्लैक कैंडल एक दफा फेल हुई 1510 में, उसने 4.75 बनाया और फौरन ही नीचे आ गई, राइट. इट्स ओके, एंड देन बट आई रिकवर्ड इट इन द नेक्स्ट ट्रेड. सो सर देखिए, नैस्डैक का कोई एटीएम नहीं है. नैस्डैक में मैं क्या करता हूँ, 35 पॉइंट ट्रेल नहीं होता ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी स्पीड से आती है. वो क्या करेगी, उसने 15 पॉइंट दिखाया आपको. अगर आपने आज देखो क्या किया, S3 पे आई, 15 पॉइंट वेंट डाउन अगेन. हाउ वुड यू ट्रेल? If you have to trail, then maybe 2 micro, and then you have to keep away 35 points. So the idea is you have to make sure you are 35 times 4 behind. Because the way Nasdaq moves are like, इतनी बड़ी मूव ले लेता है वो यार. ES तो हम कहते हैं ना, अगर वो चढ़ना शुरू कर दे तो 10 ticks behind, right? यार Nasdaq में मैंने बड़ी कोशिश की है, एक सिर्फ कामयाब हुआ. एक एरिया लो, छोड़ दो, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के ना आ जाए. तो एरिया टू एरिया चलें. अगर S3 आ गया ना, तो S3 से लॉन्ग रखें और जाके S2 पे निकलें. वो होगी इस तरह, यूं करते S2 पे चली जाएगी. ठीक है, S2 जिस तरह आज हमने S1 से शॉर्ट किया, तो बैठे ना, अगर कैंडल नीचे है बैठे रहे, और कहाँ निकले S2 पे. तो ट्रेलिंग नहीं होती इसमें, क्योंकि वो उसकी स्विंग यार 70 पॉइंट एक तरफ ले जाती है. आज सबसे नीचे लो कितना बनाया, मैं तो रोज की स्विंग्स देख रहा हूँ 99, लेकिन ऊपर का कितना बनाया 650 सर. नाइट सेशन हाई 647 दिखा रहा है, 9.5 से पहले देखें 650, 650 नीचे लगा के आई, अब वापस जा रही है. तो यार हजार की स्विंग आ रही है, आप कैसे ट्रेल करोगे? तो मुझे नैस्डैक पे तो आप सिर्फ एक एरिया लो पकड़ के, इसको एक दिन टेस्ट कीजिएगा, एक MNQ लगा S3 पे और छोड़ दें, और अपना एग्जिट लगाएं S2 के करीब, क्योंकि एरिया टू एरिया, राइट. सो दैट्स व्हाट द वर्ड ही यूजेस, एरिया टू एरिया. अगर S1 पे छोड़ दिया है तो ले S2 तक पूरा. अब जिसने S1 से छोड़ा, हमने तो 15 पॉइंट लिए वो जब ऊपर गई थी, मैं तो बल्कि S1 लिया ही नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से नैस्डैक की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अब तो अगर टैरिफ्स खत्म हुए हैं, ये वापस R2 पे खड़ी होगी अभी.
हाँ 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 150 टिक एटलीस्ट पीछे रखें। 35 पॉइंट में रखता हूँ, 35, क्योंकि 35 की स्विंग ठीक है। हाँ जी सर, आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? हाँ हाँ, तो उसको क्लिक करें, साइन करना शुरू करें। नहीं नहीं, आपका जो भी पूछ रहा है तो ट्रेडर नेम आपका नाम, हाँ वैल्यू आपने कुछ लिखना है ना, जो उसके सामने एग्रीमेंट पढ़ना शुरू करें ना, क्या 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 रहे, लेकिन ट्रेडर नाम लिखा है ना पीछे, तो अपना नाम लिखें, तो वैल्यू आपका नाम होगा ना। एक प्रॉफिट का अकाउंट नहीं, मैं तो देखा मार्केट ये वाली नीचे आ रही है सभी के मैंने लिक्विडेट हो गया। सॉरी हाँ ठीक है। नहीं नहीं, ओवरऑल आपका खराब हो गया। जो 1500 से स्टार्ट किया था ना, एक ट्रेड में 600 हुआ है, लेकिन पीछे भी तो होता आ रहा होगा ना, तो टोटल 1500 हुआ है, खत्म हो गया। पिछले दिन भी हुआ ना, तो उसको उसने अपने 1500 का मैक्सिमम बकेट दिया है। तो अगर आप 4 दिन 500 कर रहे हैं तो अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। हाँ वो नंबर नहीं केयर है, वो नहीं, मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, उस नंबर को नहीं केयर करनी। वो जो ट्रेडर वेट में ड्रा डाउन लिखा होता है ना, वो नंबर होता है, वो 1500 हो गया। तो अगर आपका 50,000 का, तो आपको 2000 हो चुका है। जितने एक्यूमुलेट हो गए आज के 700, कल के 300, वो प्रॉफिट पड़ेगा, लेकिन वो ऐड नहीं करते प्रॉफिट। अगर आपने डे 1 में 200 बनाए, ये नहीं हो गया कि अब आपके पास 2200 का लॉस है, 2000 ही है, अब वो 400 गिरा, फिर अगले दिन 200 गिरा, फिर अगले दिन 300, तो जैसे 2000 पूरा हुआ, खत्म हो गया। तो आपने ड्रा डाउन का नंबर देखना है, कैश अमाउंट में नहीं देखना। मैसेज मैंने किया था आपको अदनान बैंक। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। नहीं देखें, फिर मैं ये हरनीत के साथ बैठे हैं आप, लेकिन वो चारों गए अंदर, वो कुछ ना कुछ तो उनसे सीखा है ना, क्योंकि अगेन मेरा बहुत एडवांस है, जिस तरह उन्होंने कहा। तो या तो वीडियोस है मेरी सारी कि, तो मैं रेकमेंड करूंगा सुबह आके या माजिद भाई या हरनीत के साथ आप बेसिक्स ले लें। हाँ, तो एक सेशन हरनीत के लगा लें, उसका नाम ही लिख देते हैं हरनीत रूम। गोल्ड में 30-20 गोल्ड, वो और कुछ गोल्ड जैसे ग्रीन होता है बाय कर देते हैं, बाय मार्केट पे, और वहां से निकाली जा रहे हैं। बस टच से नीचे डन। अब उसकी पेमेंट भी फीस भी पे करें, नीचे उसको लिंक आया है फीस पे करने का 150। फिबोनाची बॉक्सेस सारी हैं, फिबोनाची वाली नहीं है, मेरी नहीं है, डैनियल की है फिबोनाची बॉक्सेस। तो जो 5 वीडियोस हैं उसके अंदर सारा बना हुआ। नहीं 4 हिंदी इंग्लिश में है, नीचे 5वीं बोनस वीडियो है। यस यस यस। भाई मेरे को जो पैसे लुटाने होते हैं तो मैं बोलूंगा, हर एक का ना डिफरेंट मेथड है। वो पैसा कमाते ही पैसे लुटाने पैसों का नहीं। एक लिंक ईमेल में आया, एक ईमेल में आया। चेक करो आपको क्या रहा था, बारी चेक करो जो रहा है। हाँ, जिसमें आप एक्सपर्ट हो जाए। सिंपल है, ये नज़दीक है, गोल्ड है, गैस है, कोटे खा के पता लगना कितनी कुट हो रही है, कितनी मिट्टी मार रही है। हर ट्रेड का स्टॉप लॉस है जी, कोई ऐसा ट्रेड नहीं है जिसमें स्टॉप लॉस ना हो।
लेकिन सबसे बेसिक ट्रेड वही बताते हैं, ग्रीन टू बाय, रेड टू सेल, बोथ चार्ट्स आर ग्रीन, कीप बाइंग, बोथ चार्ट्स। यस यस यस। Sir, my super area is on the other side. जैसे अभी ये नीचे आ रही है ना side. Talk to Daniel. He will fix your super areas. हाँ नहीं, आपको एक लिंक भेजा है उन्होंने, भेजा है, उस ईमेल के नीचे लिखा हुआ है कि क्लिक हियर टू पे द मास्टर फीस। ये महीना करके हमारे पूरे 4 साल खराब करेगा। कल जो कांग्रेस की स्पीच में बंदा निकाला उन्होंने, याद है, एक बंदा खड़ा हो गया था। हाँ यस, उसको, क्योंकि वो अच्छा होता यही है कि जनरली वो खड़े ही नहीं होते, डेमोक्रेट तो तालियां भी नहीं बजाते उसकी, किसी उठते ही नहीं। इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बन गई है मुझे लगता है, ये जो है ना, इंडिया का तो मुझे पता नहीं, पाकिस्तान का वो भी ऐसे ही भाई है, एक लाइन ही है बीच में, फर्क तो कुछ नहीं है। टेक केयर जी, टेक केयर। It looks like they're very divided, America now. Sorry? They're very divided. Oh yes. We get this joke, it's like, oh, we're gonna have another visa for $5 million. अब एनक्यू नीचे जा रही है, लेकिन यहाँ पे ऊपर आ रही है, आप तक वो ऊपर आ रही है। पाकिस्तान के लिए तो 150 करोड़ हो गया, दोनों सेम जा रही है। 150 करोड़ दोनों नीचे जा रही है, कोई फर्क नहीं है, सब दोनों नीचे जा रही है। देखो वो 150 पर आ रही है, जब हम बात कर रहे थे ना 170 की बिकती हो, यहाँ पे भी आ गई, टीवी पे भी आ गई है यूएस दिखाएं ईमेल, इसके अंदर ना ईमेल जो आपको आई है, जहाँ सर्टिफिकेट वाली की, उस 3 ईमेल है आपको आई है। मैंने डाटा पीछे हाँ पर डाटा पीछे चल रहा है 2014 पे है ये, इसके नहीं 2013 दिखाएं, टिकट दिखा ना, टिकट लगा के रखो। नहीं वो ठीक है, एक और ईमेल आई, एक तीसरी ईमेल है जहाँ इसके अंदर कर्क से आई होगी। हाँ, उसकी 3 ईमेल हैं, एक में लिखा होगा पेमेंट कहाँ से करनी है। कर्क से एक ही आई है, वो ओपन डॉक्यूमेंट वो तो मैंने कर दिया। नहीं और भी आई है, मुझे एनी डेस्क थे। 1941 019। Nasdaq is coming down here, but Nasdaq is going up there. अब आप जा रही है ना, तो मेरे तो नीचे आ रही है, आपका वो ऑटो टिकट लगाओ, उस पे करंट रेट होता है। अरे यार ये आती है, आपका अपना चार्ट ठीक हो गया उसका। ये देखें, कंग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग आई है ना, और ये बाकायदा लिखा है कि आप यहाँ जाके ये लिंक को कॉपी करें और अपनी पेमेंट की लिंक पे करें। ये आ गई ना, पहले आपने साइन कर दिया वो, ये वाला साइन नहीं हो गया। लॉग इन करें इसमें लेजेंड्स में, और
चार्ट बार बार फ्रीज होता है, इसका क्या हाल है? सर फ्रीज होना ही नहीं चाहिए हो जाता है। अब, लेकिन मैं अभी देख लेता हूँ एक चीज। यहाँ पे अकाउंट ऑन करो, हाँ जी, मेक श्योर आप फास्ट टेम्पलेट्स में हो। फास्ट में ही हो। फिर फास्ट में तो नहीं ये मसला होना चाहिए सर। प्लान से आगे तक पे होगी। नहीं नहीं, आपको जो मैंने लिंक पेस्ट किया है ना, खुल गया अकाउंट। ये लिखा है मास्टर। आपने 25,000 वाला पास किया है ना? ये आ गया 50,000 25,000 149। इसका कोई कोड नहीं है। एंड ओंटारियो एंड 150 पे कर दें। हो गया जी। अब 10 मिनट्स में आपका नया अकाउंट बन के आ जाएगा। उसका क्या है लिमिटेशन? सर उसकी सेम थिंग है, तो मैं आपको कल सारा बता दूंगा कि उसकी 11 के बाद ना कि उसको कैसे ट्रेड करना है। उसमें अब एक दफ़ा आपने पे किया, मंथली कोई फी नहीं है। That's it. हाँ हाँ, अगर उससे मैक्सिमम नहीं जाना। एग्जैक्टली 450 नहीं 600 बना सकते हैं। 600 बना सकते हैं जी सर। चार्ट्स अच्छा, ये इसकी कंसर्न ना मैं आपको हम डैनियल के पास गए, उनसे एड्रेस कर लें कि मेरे चार्ट्स क्यों फ्रीज हो रहे हैं, क्योंकि मेरे आज तक नहीं हुए, होने नहीं चाहिए। क्योंकि आप फास्ट टेम्पलेट में ठीक है, नैस्डैक फ्रीज हो रहा है। अच्छा, पहले तो नैस्डैक का डॉम बंद कर देना, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, मैं कभी यूज नहीं करता, नहीं, वैसे रखा है, नहीं, मतलब चेंज करने के लिए वो जो। नहीं फिर उसको, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें आप लोड करते रहेंगे ना, तो नंबर 1 कभी भी नैस्डैक 1510 में खोले ही ना, और 3020 में। ये देखें यहाँ आपने 1510 में नैस्डैक खोला हुआ है, वो उसके पास रैम ही नहीं है। और 3020 में भी नैस्डैक करनी है तो एरिया से, तो हाँ इसको अब इस साइड से नैस्डैक, जहां जहां नैस्डैक आपको नजर आ रहा है ना 3020 में, उसको भी बंद कर दें, डॉम को भी बंद कर दें। खत्म हो गया ये अकाउंट। फिर आपको बैक टू जीरो ये दोबारा करना पड़ेगा। नहीं नहीं, लिमिट्स हैं, तो मैंने कहा कल मैं आपको वो सारे बताऊंगा। 11 के बाद बता दूंगा। एरिया वाला तो खुला रहे ना, एरिया वाला खुला रहे, क्योंकि ऐसे ही होता है जब मैं ES to NQ करता हूँ। हाँ तो क्योंकि उसके बाद मेमोरी नहीं है ना, उसके बाद मेमोरी नहीं है कि 3020 1510 में नैस्डैक खोलना ही नहीं है ना। और सेव कर लीजिएगा उसको एक दफा, वरना नेक्स्ट टाइम। Sorry? Yeah, give me any desk, please. One, 4, 3, 2, 6, 3, 2. Accept, please. सर ये भी ब्लैक कैंडल कितनी प्यारा सेटअप बना, हायर हाई, हायर लो, lower high, black candle to the downside. Again, that worked 100%. It gave you black candle to the downside. No problem. You take care. Was it okay today?
कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं फरवरी 7 ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ उसका प्लीज सर सजेस्ट कर लीजिए सर विक्रम सर ने क्या सीखा क्या क्या के बैठना है नो प्रॉब्लम, तो सुनना है नो प्रॉब्लम जी। मैं सिर्फ सेटअप्स देख रहा हूँ और कुछ भी नहीं। कितनी प्यारी 13 पॉइंट दे के गई यार। मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ। ओ 13 14 पॉइंट, माय गॉड मैन। Holy shit. यस यस। Higher low, lower high. And black candle to the downside. These are like you're stealing from the market. You know, You're stealing from the market. yeah, we are the top 3% who don't want to give away. We wait for the setup, but that doesn't work on Nasdaq. Nasdaq in the evening, 30-20, use that. Nothing else. Same thing? In the evening. Is this a new thing? No. It's just he asked me to reintroduce a lot of stuff for 2025. Yeah. So it's been always here for 18 years. That's the first lecture. Yeah, but the first lecture he does it with the drawings. Yeah, so You showed on I showed it on how this works. For me. There you go. My friend. 75 बनता फिर हम है 75 कहाँ से बनता? हाँ 75 बनता है जी, क्योंकि पिछला लो 75 है, 3 दिन पुराना वाला। एक दफा आ रही है उसके बाद अब दोबारा लो पे candle 100% our theory works. No theory. It's actually practically money making machine. हाँ जी। और सर 30 मिनट्स के ग्राफ में ना डाइवर्जन आ गई है। ओ सर अभी ये 29 तोड़ेगी, एक और लोअर लो बनाएगी। नया लो बना दिया वैसे। हाँ जी। नहीं 29 के बाद उधर का लो बन गया 75 तक। $75 आ ही गया, ऑलमोस्ट आ गया जी। 71 तो लगा दिया उसने MNQ पे। 68 67। अब देखें ये कहाँ रुकती है जाके। माय गॉड, पिछला 75 तो तोड़ दिया। Will it bounce from here? Let's see. 64. सर FTMO में कहाँ से डालूं मैं? सर FTMO में डेली चार्ट का लो देख लें। 1440। Yes. Can you fill this form? 57. My God, man. लेकिन अभी तक 75 minus 35 40 तक जाना चाहिए इसको। नहीं 40 तक का तो स्टॉप लॉस आपको। Can I register as my wife's name? Sure. But you need ID for her. Yeah, I can get that because I'm studying somewhere else. Yeah, no problem. That's fine. Also from the government. Don't worry. 24 तोड़ गया जी। 52. Do we have a bottom yet?
तो 60 पर 20.60 Not yet. 49, 47. पिछला 74 भी तोड़ गया जी, 1000 पॉइंट आ। देख लो भाई FTM में नास्डैक में लॉन्ग कर दूं एक लॉट Yeah, it should be okay, I think. एक लॉट 100 स्टॉप लॉस 100 सेल कर लो एक ले लो कह रहे हैं बिल्कुल कुछ तो करो भाई 19322 पे गिरा दो 8000 में गिरा दो देख लो लगा दिया या 100 का लॉस उड़ भी गया भाई 42. 75 did not work. भाई $100 का लॉस भी हो गया डालते ही कितने लॉट ले ली 10 लॉट है एक लॉट लिया था यार 100 पॉइंट से गई का है ये आपने मार्केट 10 पॉइंट है नहीं नहीं एक लेता हूँ नहीं ओ $10 का लॉस था $10 का स्टॉप लॉस अभी बोलूं डालते ही उड़ गया 100 का स्टॉप लॉस 100 का प्रॉफिट अभी नास्डैक नीचे आ रही है ना और कंसोलिडेशन नहीं काइंड ऑफ चली गई है 42 से वापस 70. अब मेरा ख्याल है इनका बॉटम का मूड खत्म हो गया. अमन बाकी मुझे होगा आपका मैंने बनाया लॉन्ग किया इसका एक माइक तो नहीं कम ट्रेड होल्ड किया हुआ है. हाँ सर FTM ओके ओके ओके. सर 3 मतलब 50 का लॉट है ना उसमें मैंने 3 डाले हैं बस 3.0 क्या 10 3.0 डालना है या 10 डालना एंटी वैक्स वाले को हो गया मीजल्स 3 को अमन 1.0 डालना है या 3.0 Okay, let's try it one more time. I think I didn't log in. So put in your password again and click on register. सर 2 पॉइंट से रह गया मेरा स्टॉप लॉस 35 पे लगाता हूँ ना मैं. हाँ जी करिए 42 तक गया वो तो देखे ना 75 का मेरा एंट्री थे ना -35 40 पे गिरता तो मेरा काम हो गया था वो 40 पे गया वैसे नहीं मेरा 42 MNQ मेरा 42 तक गया. अच्छा. मेरा 42 तक गया और लाइक उसने मुझे प्रॉफिट दे दिया.
टाइप ऑफ प्रॉफिट ट्रेड होता है वो कितने पीछे होता है? इसके हफ्ते में मुझे नहीं मालूम प्रॉफिट ट्रेड होता है। अब $100 से $44 का लॉस आएगा। Check your email and confirm. और सर तबाहियां कर देती हैं नास्डैक में। सर मैं स्पीचलेस है। अगर किसी ने कहा हो कि मेरे 5 सेटअप तो क्या दिए हैं। ओके सर। ओके जी ओके। ओके जी, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। लॉक लगाओ ना, लॉक लगाओ ना, प्रॉफिट को लॉक करो ना। ये 45 के पॉइंट से उसको 30 को लॉक करो, 33 लॉक कर लो। हाँ कुछ तो लॉक करो ताकि अगर रिवर्स से जाए तो सेव करो। हाँ इनके 50-60 ट्रेड को ऐसे करने पड़ेंगे इसके ऊपर। कुछ तो करना पड़ेगा कुछ Got it? एरिया तो काफी Did you confirm the email? एरिया से 10 लाख या 15 लाख लेके निकलेंगे नौकरी करने। 10 लाख मेरे ख्याल से तो 2 लाख का 2-3 लाख का 10 लाख रिस्की हो जाएगा यार $7,000 पे कम करने में तेल निकलेगा। तो तेल तो निकल जाएगा लेकिन अगर ऊपर ने छीन मार दी फिर हाँ वो बताओ। वो जो ऊपर ये बात है। तो फिर ये फार्म भर दें आप। ये भी बात है पकड़ दे एक बार मार दी तो कुछ भी हो सकता है ना। और वो कल सुनो मेरे को 7,000 की जगह 14,000 से कम करने पड़ेंगे। राजा सुनते थे ना, राजा इसकी शक्ल पसंद नहीं, इसको फांसी दे दो, इसका बहुत फर्क है। अच्छा राफे भाई, I'm sitting at 193,250 in FTM. क्या चीज? I'm sitting at 193. Let's say 193. तो आपने लूज किया 200,000 में 7,000। तो ब्रेक इवन होने के लिए 7,000 चाहिए पहले। तो आपको होल्ड करने हैं बड़े बड़े ट्रेड्स एटलीस्ट लंबे। ये 100 करके तो नहीं निकलेगा ना। तो ये जिस तरह अभी 20,000 है 700, तो 5 लॉट छोड़ दें क्योंकि आपके पास अभी भी 10,000 का पूरा बोनस पड़ा है नीचे पीछे। क्योंकि टोटल 20,000 है ना, 20 में से पहले दिन 7 गया। अब एवरी डे का मैक्सिमम लॉस 10 है। तो 5 को फिर आप एटलीस्ट $500 तो ट्रेड करें। यही और तरीका है 7,000 रिकवर करने का, और तो कुछ नहीं एफटीएमओ में। नो नथिंग। If it goes to R1,
कार्ड प्लीज। हेलो सर, क्या हाल चाल? बढ़िया जी। कल रघुवीर की कॉल आई थी। हाँ, अच्छा मैं ना किसी के साथ बैठा हुआ था और वो ट्रेडिंग का कुछ बोल रहे थे, मैं अर्जुन के साथ बैठे हुए थे यार। हाँ हाँ, आप जानते हो? मिल गया था ऑफिस में। मेरा कोई फ्रेंड है, वो 1 लाख कमा रहा है, तो मैंने कहा 2 लाख भी कमा रहा है। मैंने उसको एड्रेस दिया, ऊपर पे जाओ। मैंने यहाँ का एड्रेस दिया, मैंने आफे का नंबर दिया, मैंने जाके मिलो, मैंने डायमंड का नंबर दिया, बात करो जाके अगर आपको करना है तो। कि नहीं आप सिखा दो, मैंने कहा वैसे में होता है। मैं उसको 4 महीने पहले मैंने उसको बोला तू आ जा, मुझे पता है कैसा आइडिया आया। इसका बड़ा भाई नहीं है वीर, हाँ, वो यहाँ आया सर से मिलने। अच्छा, वो ऐड के लिए क्योंकि शिवानी का प्रोग्राम में करते हैं। हाँ, तो वो तो रणवीर ही तो है। हाँ सर, कैमरा ऑन है? हाँ जी, हाँ जी, मैं अभी बस लाइव स्ट्रीम बंद करता हूँ। ले गए जी ऊपर सर, पहला ब्लैक कैंडल लगा हायर लो के बाद आप ऊपर चल। सर ये मिस ना किया होता प्लीज। ब्लैक कैंडल टू द अपसाइड सर, देखें लोअर लो लगा, लोअर हाई लगा, पहला हायर लो लगा, ब्लैक कैंडल टू द अपसाइड, शूट टू द अपसाइड। यार सर देखें 15-10 देख लें, 15-10 में अभी 30-20 में हायर लो लगेगा, लेकिन 15-10 का जैसा ही पहला हायर लो लगा मैं ले गया जी कैंडल में। इसमें $237 दिए उसने मुझे। Okay, go through each box and then hit I agree. So I gotta go. Shut off. Thank you very much, guys. See you guys tomorrow.